Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening. जहाँ पर भी आप हैं, hope you're doing well. Hope you are staying safe and you're staying healthy. Um, ये वाला session, even though this was not planned in a way कि इतनी बड़ी एक्टिविटी आज हो जाएगी, but I am so glad आज जो हुआ है, we all know about it and we are so happy, so excited. We feel so blessed and we are seriously looking forward कि सिर्फ नवाब मलिक नहीं, हर एक वो इंसान जो इस कंट्री के खिलाफ काम करता है, जो इस कंट्री के ऑनेस्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट काम करता है, they all get behind bars and they get arrested for all the crimes, plus not only for speaking against the honest people, for playing dirty tricks for the country, against the country. इसलिए बहुत अच्छा लगा आज की ये न्यूज़ एंड आई एम श्योर yes, it is no more a breaking news now. सुबह से एक्टिविटी चल रही है, सुबह 4 बजे से, this man who was constantly speaking a lot of nonsense on social media, and otherwise प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके दिमाग का दही कर दिया था इस बंदे ने. फाइनली वो कहते हैं ना, जैसे समीर वानखड़े ने सिर्फ एक, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू, neither of any of the family members will be able to speak about this issue जो आज हुआ है, जो एक खुशखबरी आई है, because the case is still sub judice. But Sameer Wankhede only had 2 words to say about this: Satyameva Jayate. So this is how he is looking at this situation, and I'm sure the entire family is also watching it closely, क्योंकि पूरी फैमिली को बहुत टारगेट किया गया, बहुत सारी चीज़ें फैमिली के अगेंस्ट बोली गई, करी गई. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट इवेंचुअली, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, बट स्लोली स्टेडली रेस तो भाई वही जीतता है जो सही होता है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड दैट दिस इज हैपनिंग. ये जो आज का सेशन था, दिस वाज अबाउट समथिंग a little kind of different from जो आज हो गया, but keeping in mind that the case is sub judice, we will try to keep certain questions and certain things away. And of course, we are not talking to somebody who's not aware of the system. So she is Advocate Yasmeen Wankhede. So obviously she knows which questions to answer, what and how to answer those questions. तो जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट होंगी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू ज्वाइन. और अभी अभी मुझे एक और पता लगा है, कपिल भाई से, देयर इज अनदर सेशन दैट ही हैज प्लान्ड at about 9:15 p.m. With Mamta ji, and let's see if she can join this session as well with Yasmin ji. But 9:15 baje Mamta Kale ke saath we are going to evaluate, and we're going to look at the goodness in this arrest that has happened, और कितना जरूरी भी था ये अरेस्ट होना, क्योंकि ना तो सिर्फ इस इंसान ने झूठ के पिटारे खोले हुए थे, but on top of that he has been doing a lot of anti-national activities. दाऊद के साथ जो कनेक्शंस, एक्चुअल तो दाऊद इनका नाम होना चाहिए था, जो इन्होंने इधर उधर नाम लगाने की कोशिश की थी, बट इनका होना चाहिए था, और आई एम सो ग्लैड दिस हैज हैपेंड. बट लाइक आई सेड, आज के सेशन में, जस्ट बिकॉज द इशू एंड द टॉपिक इज स्टिल सब जुडिस, we'll keep it to a bare minimum, but I'm sure you would love to say a few things, share your love and your emotions with the entire Wankhede family and of course Yasmin ji. So as I can see, she's here, so I'm going to take her on the screen. A person who needs no introduction. जैसे समीर वानखड़े को सिंघम बोला जाता है, she is the lady Singham of the house. She manages, and she's mentioned it in the past as well. हमारे साथ जब सेशन हुआ था कि बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हीं के कंधों पे है, और यही उस चीजों को मैनेज करती है. Even Sameer kind of relies on her for pretty much all the legal aspects and everything. And she is one of the strongest persons I've also met on social media. Someone I proudly and very, very humbly, like to call my sister as well.
एक ऐसा रिलेशन बन गया इन द लास्ट फ्यू मंथ्स दैट even if we don't talk, even if we don't interact, we know we are there for each other. और कभी भी कुछ भी होगा, we will stand by each other. And more importantly, this entire family has gone through a lot. I मैंने कई अपने सेशंस में ये बात कही है, इस तरह की लाइफ, इस तरह का ये जो लास्ट के कपल ऑफ मंथ्स थे, मैं अपने दुश्मनों तक को नहीं विश करूंगा कि वो इस तरह की लाइफ को फेस करें. बट दिस फैमिली हैज फेस्ड इट, come out victorious, and will come out victorious in every other aspect. So without wasting any more time, let me get the lady Singham, and here we go. Hello Jasmine ji, नमस्ते वरुण, नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? हाउ Very हाउ इज good. एवरीबॉडी? हाउ आर यू? अभी आपको एवरीबडी तो सब एवरीबडी आके आपको बताएंगे. आज तो दे आर ऑन क्लाउड 9, 10, 15, 20, 100, जो भी आप कहें. एंड वी ऑल नो द रीजन बिहाइंड इट. बट लाइक आई सेड, मैं थोड़ा सा आई वाज ट्राइंग टू सेट अप बेस लोगों के सामने, बिकॉज दिस केस इज सब जुडिस. आई अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन या रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, सो वी रियली रिस्पेक्ट दैट. बट सिर्फ इतना कहूंगा, इन द कैपेसिटी ऑफ अ कॉमन मैन एंड एज अ कॉमन मैन योरसेल्फ, कि जैसे समीर ने एक मैसेज में सिर्फ मुझे लिख के भेजा, सत्यमेव जयते, इवेंचुअली truth will win, and it has started showing us the path. So on that happy note, I would say, I'm really glad that we are doing this. ये बहुत जरूरी भी था. और क्योंकि लोगों को बार बार बताना भी जरूरी है, और थोड़ा सा उनको जताना भी जरूरी है that we all stand for truth, we all stand for facts. यहाँ पर बहुत छोटी मेमोरी होती है लोगों की, एंड दे फॉरगेट या सर्टेन या थिंग्स. तो इसलिए थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू वरुण, थैंक यू। You've always been so supportive. You have always been so like you are next to your family, like a brother. More or less, you've been all the way along. I remember the first interview that I remember when I did a thing with you. We were talking, Yes. and I was like, so in the office, that thing was going on, and you were like, "We all are with you. Please, send my regards to dad." And it was you all have been a back sincerely, all through all. We again, not just me, there are so many people, so Every many viewer, people. everybody who has been Exactly. tagging me on Twitter. I'm not a media person as such. I do not give responses. I believe in a silent answer. Exactly. I do not write too much, or I do not speak too much. I feel it is the lawyer's work is always to work and not the action speaks louder than word. But then I always read it, and I always read the help, the way you were, the supportive, the people are supportive, they tag me, I'm always reading it, no matter if I answer, if I don't, but it's always, I'm always seeing it. और चिल्लाया था, और बहुत बहुत बार मैंने ये बोला था, that even if sometimes, because of some obligations या चीजों की वजह से they're not able to come. And obviously यार, obligations की मैं क्या बात करूं, we all have seen the journey. I mean, Yes, obligation को you छोड़ have के. been there from the start. You have seen Exactly. the baby grow, and it's like you have always, or everybody has been there from the start. And Correct, I correct. just remember one slogan that we had, that we all stand very strong with Samir Wankhede. That Yeah. is that I'm hearing till today. I'm hearing that And you we will hear it believe in till the in very and end. like in an honest officer. That slogan has been there all along. बिल्कुल, बिल्कुल. See, Yasmin, I'll be very honest, right? हमने बहुत कुछ देखा है in the last 1.5 years, almost 2 years now. बहुत सारे लोगों के वो असली चेहरे दिखे हैं. हम दूर बैठे हुए हम समझते थे, हर किसी की एक ड्यूटी है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफ कोई भी हो, सबकी एक एक जॉब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बट लास्ट 18 से 19 महीने या 20 महीने कहूँ, वी हैव सीन कि कैसे लोग, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे पॉलिटिशियन की पोजीशन हो, चाहे कोई भी रैंक हो,
they have misused their power, they have misused their influence and what not. मतलब हमने बहुत कुछ देख लिया। एंड समीर को हमने देखा है शुरुआत से, उसकी स्टोरी सुनी है, देखी है किस तरह से फ्रॉम अ हम्बल बिगिनिंग टू ऑल द रैंक्स दैट ही इज हेल्ड, और वहां पर भी कितनी ऑनेस्टी से बिना किसी डर के ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है, ऐसे ऐसे लोगों से, और कंट्री के लिए कितना किया है। आज भी मैं नहीं भूलता किस तरह से वो पेरेंट्स मेरे सेशन पे आते थे जब समीर होते थे, और नहीं भी होते थे तब भी आके कि वरुण प्लीज हमारी तरफ से एज अ पेरेंट प्लीज टेल समीर that the job he's doing is commendable, is phenomenal, क्योंकि समीर की वजह से मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, they feel safe. They are not into drugs, or they got out of drug because of the fear that Yeah. NCP instilled. सो हम जितना तारीफ करें, जितनी बात करें वो कम है, बहुत बहुत सही है वो तो। बट मैं फिर भी यहीं से शुरू करूंगा। आप थोड़ा सा लेट्स काइंड ऑफ टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द इंटायर जर्नी अभी जितना, कीपिंग इन माइंड दैट ऑफ कोर्स वी वोंट टॉक अबाउट द केस एंड ऑल दैट स्टफ, जितना हम लिमिटेड कर सकते हैं। बट ये लास्ट के कुछ महीने जब इतना ज्यादा सब चीजें हो रही थी, प्लीज वॉक अस थ्रू, प्लीज हमारे साथ शेयर करें वो पेन, वो जर्नी, सो दैट एवरीबडी रिमेंबर्स दिस, एवरीबडी नोज कि क्या क्या आप किस किस चीजों से निकली हैं। It just started off. It just started off without any knowledge. We all were. Uh, we were shocked because it never happened from 2008. We I've never heard my name. Never heard dad being questioned about his Indian being asked whether you're an Indian or not. Yeah. I have never seen that kind of like his work was very apart from us. We used to not talk even about work. The only time when I used to know people from outside telling me that thank you madam, thank you so much, आपके भाई ने ऐसे काम किया है कि जिसका मतलब हम एहसान नहीं चुका सकते. Yeah. And I just know, like, I've just heard good things about him. And one final day when I get up is like I see my dad. I feel very bad about my dad in the whole situation. I feel very bad about him Yep. that he is 72, I think, and still not questioned. And he was questioned about his caste. He was questioned about his existence. He was questioned about like, where do you belong, and the whole villagers were tensed. My brother, I remember once he called me and he told me that my bhabhi called me from village, and it's a cousin, bhabhi. So she called me and she's like Tai, we call her. So she's like, my husband is shivering, like, he's gone on glucose down, but he has to stand there. So we were all so tensed, and he had an accident and he couldn't, work with his. He couldn't walk also, and he was going and giving an evidence. My auntie is also Gumfa auntie, and they have all gone to the police station there in the village, and they are very sensitive people. I will only want to say that the Wankhede family is having strong women, but not everybody will have it. Yep. Yep. बिल्कुल। And not every woman is going to stand strong and take, not every lawyer, I think, is going to take a name or title of an extortionist, a lady don, or something very weird like that. Right. So yes, it was a very bad journey, and it is not yet over. We feel out of place, and when the gist of all is what, when you question yourself, is that is he, because he's done an honest work. And Yeah. whatever we talking about, I always told you that it would be something else, it would be corruption, it would be something else, but he's talking about drugs. We're talking about drugs here. So, Yep. I just want to, I just wanted to, at a point of time, I personally wanted to go and say, hello, we are talking about drugs, we are talking about narcotics, we are talking about, illicit stuff. And that is what is the problem, that everybody is
So like, what are they talking about? Where is the caste? Where is Exactly. the where it is attaching each other? You Right. have taken out the exes, you have taken out the old marriages, you have taken out connections. It's a personal affair. अरे इन लोगों ने तो आपकी मदर तक को नहीं छोड़ा, तो मेरी आप लोग माँ तो। के अभी हाँ। एक इमेजिन अ मैन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन अ मैन हु गोज आफ्टर हिज मदर्स डेथ टू Correct. जस्ट सी हर वेयर शी इज प्लेस्ड? Right. Yeah. It's like, we have a pope and we go to see that pope. We go in a church. It can be same considered like that. So she has a mortals there. That is how it can be explained. Yeah. So they had cameras on him and they were asking him that why are you going to a mortal? Why you are going to your mother? He felt like he's going to his mother. So how could you send that emotions across? And it Correct. was vandalized, and it was put into situations like that. That I was like, what is this? What is this? Correct. And it still haunts me. It is not that Yeah. Yeah. that we have come out of that. I do sound a very strong, but I have my own issues. I know I your weak moments. Your end of the day, You one know thing which I everything, Varun. You know everything. exactly. So I know. I yeah, know. it haunts me. Of course, it haunts me a lot. But Yeah. there we have to fight. We have to be there till the end. Exactly. And we will. I'm sure. The आप तो That बात goes कर रही। without saying. Once you enter into a war, you do Right. not see whether if you think that you are going to die, or you enter into a war and you think this is going to, you don't have any end, you're just fighting, then you don't get scared. That Right. is the phase that I am still probably going on in. You just have to fight each and every single day, getting up, getting to something new, weird accusations on yourself. A person like me so loud, why would I be going to Maldives and getting ugahi done? I don't know, that ugahi word still strikes me, I and know. it is bad for a woman. Though I am strong, but I we do not, the whole Wankhede family didn't deserve this. Deserve, that is maybe, a very, very lighter word. You guys deserve It was on a very something. vernacular medium though, Huh. so You it was deserve on a something very vernacular. totally different. You deserve all the accolades. Samir deserves all the praises, He is appreciation. he is a man with principles. He's a Yeah. man. क्या घड़ी पहना, क्या जूते पहना, 1.5 लाख की शर्ट पहना. What was going on? Correct, correct. Like, this was below the belt. Absolutely, absolutely. और Still, tell us a little bit about, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे. We know uh, how Kranti ji and you have kind of managed it, but knowing your brother, थोड़ा सा इसके बारे में भी सबको बताएं. What was maybe going throughout his mind throughout this whole time. What was going in his mind, and what were couple of things जो वो हमेशा कहते होंगे, in a family setup, कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें या इस सिचुएशन से कैसे निकले, या व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू दिस होल फियास्को. frankly speaking, when we used to hear something, we had a team. We have a team of excellent lawyers for sure. Yeah. We just, and in even in the family, when he used to sit quietly, and then I was like, everything is going to be all right. And I think we never we don't talk so much in words, but we understand that in the eyes. And he's like, I was very sad at times. It was like at times I giving up, and it was like, and सच की हमेशा जीत होती है. बिल्कुल. He used to always tell me this, to डर मत, तू सच की हमेशा जीत होती है. So the honesty will always win, and I will. We are going to fight it till the end. We have entered it. So that at times I used to be low. It's like सच की हमेशा जीत होती है. So शांत हो जाए, like that. And after, like, we both staring Bhabhi, and Bhabhi Bichari Kranti doesn't know what is going on. She's like, how to handle him, how to handle the thing, nervousness. She's like, we look into each other's eye and like, okay.
It happened Exactly. to us. That is what happens, and later on, that is all tensed. He was the one who's like sitting in the night. At times, he had such moments when I have the whole bed has darkness, and I enter into the room, and he's just sitting like that. Like, this is very wrong. This is very wrong, And like I call up Bhai, and he's like very stressed, and I was like, this is very wrong. He's like, it's okay, it's okay, it's okay. So that is Wow. how each and everybody handled the other person. If one falls, the other comes up. If one falls, the other person comes up. Exactly. I know हमने we've seen this, we've experienced this, हमने तो देखा है सब कुछ social media पे भी, how you guys initially you all came out to see how we could all work together on this, और उसके बाद due to all the legal and other issues, of course you were It not. went all natural, Varun. It went all natural. Correct, correct, No dramas, no filters. correct. It went all natural. The Yep. way it came, we took it. The way it came, we took it. Like the Spartans, like I guess. Few people, nothing in hand, no money, no power, but Right. just our education along with us. We are not Exactly. flooded with money. We are not flooded with power. So the way it came, we took it. Like Spartans, we have to go in the war. We have to finish it, or we'll die. Probably we'll survive what it is, but we will. It is the high. The internal light is so. It is so illuminating that we did not feel dim for even a moment. Like we did Right. not think of giving up or getting over, or anybody feels very, it was never like that. It was always on the feet. The Mhm. way it came, I gave. The way it came, I gave it. The way it came, everybody had their own parts. Correct, correct. And I think अगर देखा जाए what has happened today and what will happen, I'm gonna assume in the future as well. uh, this is the that faith in our system. This is the faith in Yeah, yeah, honesty जिसका completely. हमें The दिख रहा faith है. in the judiciary system, the faith in Correct. knowledge, the faith in law. Right. Yes, it has stood up. It has stood up all. I even want to send across this message to all the citizens who are and all the people who are watching me that we have an excellent law system. We have an excellent judiciary system, and we have to abide by it. I have received justice. I fight for justice. So we have to believe in it completely. Absolutely, and that's a good and a strong message as well. From Kranti ji's and the family perspective, right? I mean, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा. A mother, a housewife, and a person who's working with kids. Uh, Handling all this definitely would not have been easy. It was not easy for even you, or for Samir, or for, but you, from being an advocate, I think you still had the knowledge and the grit कि हाँ मुझे पता है कि ये हो सकता है. Samir, obviously he's a bureaucrat, he knows in and out कि ये गंदगी में तो वो, I think he would have signed it up जब उसने पहली बार IPS किया था. He knew that he will have to face it. But from a perspective of Kranti ji, how was she handling all this and what was happening? She's a wonderful, strong woman, and though everything was happening, she has a very, me and brother are the same with temperaments. We go along like same, like fire. But she's the one who paces us down, and she puts us down, and she is the cooler part of the family. So she has taken it with a lot of patience, with her kids on the hand. I remember them, she was shaking them and making them sleep, and she used to talk to me, and she just slowly talk. Yeah, yeah, the kids are sleeping. Yes, it's. She's been a wonderful wife. She's been a lot of strength, and it can be said that yes, she has taken it very, very softly, and with a lot of patience and tolerance. To understand it also needs a lot of patience, that why Absolutely. it is happening all the time, only this is happening, all the time, this is only being spoken, why this is only the topic of the house. So Correct. yes, it needs a lot of patience for a wife at least. Got it.
because Now, it is our work. If we talk about legal judiciary, this is my work. From morning 9 I start. So we are talking only about cases. We are talking only about the books, the criminal manuals, this and that, and we go along. But for her, it was something very new, and she took it. Salute to her. She I took know, it in that absolutely. manner. Okay. Now, without getting into the technicalities, right? I mean, abhi there are couple of cases, there are a couple of allegations जो हैं उनके बारे में जितना आप थोड़ा बता सकती हैं या where do we go from here on when it comes to Sameer Wankhede? What could be the worst and what could be the best case scenario? As per whatever the inquiries are set up, Mhm. um, as per the heads of the investigations, we have been given a clear chit. The ST commissions have given a clear chit. Um, everything has been, whatever is going on. We're getting out clear from it. Whatever will go on, it is sub judice. So we have never said no to any of the inquiries. We have never said no. I still respect the Mumbai police. So it is like whatever is going on, we are ready. Yesterday also, Bhai gave in this thing in the courts that we are ready to it. We are ready for the investigations and everything. So we are ready for whatever is going on. The matter is sub judice. It is in the court. Got it. Got it. Absolutely. ओके मैंने एक बिना आपकी परमिशन लिए एक छोटा सा काम किया है एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड दैट आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी एज वेल I have somebody in the backstage right now. You'll be very, very happy, and I'm also very, very happy because just like many of the warriors, this individual, this person has spoken uh, for Sameer, for everything that is right on multiple platforms. She has roared again like a lioness, and she is someone who has always stood by. Even with her busy, life, busy schedule, still she has always stood for Sameer and for this movement. I am sure she's aware that since this is still sub judice, so thoda sa, without talking about or asking anything around this person or this individual, I'm sure she's also happy hearing this news. So gonna be on the screen, and I'm gonna, without wasting any time, take her, our very favorite and very own Mamta ji. Namaskar, Mamta. नमस्ते वरुण जी, नमस्ते Namaskar, यास्मीन जी। namaskar, namaskar. All right. So thank you so much. Last minute actually मुझे अभी अभी कपिल से पता लगा थोड़ी देर बाद आपका एक और सेशन है उनके साथ, बट या यहाँ पर कपिल के एकदम साथ से ऐसे आने के लिए थैंक यू सो मच ममता जी, एंड आई एम श्योर ऑलवेज आपने भी वेलकम। न्यूज़ सुनी होगी और आप भी इसके आई डोंट हैव टू इन्फॉर्म एनीथिंग, यू आर वेल वर्स्ड, आपको सब पता है. How and what do you feel about this, and then anything of course you want to say to Yasmin ji? जी सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसे लोग जो खुद को इस देश का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं, सफेद पोश होते हैं और उनको ये लगता है कि वो इतने दम्भी और अहंकारी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जनता ने चुन करके भेज दिया है, तो फिर वो सत्य का दमन करेंगे, सच बोलने वालों को कुचलेंगे, उनको और उनके परिवारों को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये भी वीरों की भूमि है। ये ऐसी भूमि है जहां पर इतिहास गवाह है कि जिसने गलत किया है उसका दमन हुआ ही है। रामायण देखो, महाभारत देखो, जो भी देखो, सच हमेशा जीता है। हाँ, परेशानी जरूर हुई है। और यास्मीन जी, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो चीजें आप लोगों ने देखी हैं, जिन चीजों से आप लोग गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, पूरा देश उस बात का गवाह है। और आज आपके साथ, समीर जी के साथ पूरा देश खड़ा है। और देखिए, Thank you so इसीलिए much. कहते हैं ना, यू मोस्ट वेलकम। और आज जो हुआ है महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पावन भूमि पर, ऐसी एक घटना फिर से हो गई जो कुछ महीनों पहले हुई थी। और एक पार्टी है एनसीपी, उसमें तो जलजला आ गया है क्योंकि दूसरे बड़े मंत्री जी चले गए हैं सरकारी घर।
इनको बड़ा शौक रहता है ईमानदार लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, जो इस देश के लिए लड़ते हैं, इस देश के अंदर से जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की जो कोशिश करते हैं, जो कमिटेड ऑफिसर्स है, कमिटेड लोग हैं, उनसे किसी किसी ईमानदार पत्रकार से, सच बोलने वाले पत्रकार से ये आत्महत्या करवाने की कोशिश करते हैं। एक ईमानदार अफसर जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बहुत पूरी पूरी वचनबद्धता के साथ निभाया है, क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सच का साथ दे रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो उनके आप पीछे पड़ गए, आप उनकी नौकरी खाओगे, आप उनके परिवार के बारे में बोलना शुरू कर दोगे, उनको इस तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के चलते हुए आपके एक परिवार के सदस्य जो इस इलीगल एक्टिविटी नारकोटिक्स में फंसे हुए थे, वो गिरफ्तार हो गए। तो भाई जलजला आ गया, परेशानी उनको खड़ी हो गई। तो अब देखिए ऐसा होता है ना कि समय का जो चक्र और फेरा होता है, वो सच बोलने वालों को समस्या के साथ साथ समाधान भी देता है और उसके बाद जीत होती है। तो वही हुआ है। अल्टीमेटली भाई साहब चले गए हैं सरकारी घर, जो सरकारी घर दूसरों को भेजने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। देखिए मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ। और सुबह से मैं इस विषय पर लगातार बात कर रही हूँ। अभी टीवी चैनल्स पर भी मैंने डिबेट करी है, और मैं भारतवर्ष को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वरुण जी, यास्मीन जी की प्रेजेंस में ये याद दिला देना चाहती हूँ कि जो आज अंडरवर्ल्ड के नवाब गिरफ्तार हुए हैं अल्टीमेटली, वो आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उनके कुछ इस तरीके के कनेक्शंस निकल करके आए हैं। ये 2005 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उस वक्त भी इन पर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और ये तो वो व्यक्ति हैं जो मतलब जहां इनको मलाई दिखती है, जहां पर इनको मतलब जहां वजन वहां भजन वाले ये व्यक्ति हैं। कांग्रेस में गए, कांग्रेस से हकाले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए, समाजवादी पार्टी से हकाले गए, एनसीपी में पहुंच गए, और एनसीपी में पहुंच करके इन्होंने जो मतलब सत्ता का दुरुपयोग किया है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। आपने बोला कि मैटर सब जुडिस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सच और बेबाक बोलने के लिए भी जानी जाती हूँ, तो कुछ चीजें तो वरुण जी मैं बोलने ही वाली हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। क्योंकि मैं एक बात मानती हूँ कि नेता और अभिनेता दो लोगों को इस देश की जनता बनाती है, और इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता इनको अपने सेवा के लिए चुनती है, जनता का दमन करने के लिए नहीं चुनती है, जनता के साथ गलत करने के लिए नहीं चुनती है। और जो लोग देश और जनता के साथ खड़े हैं, उनके साथ अगर ये गलत करेंगे तो फिर इनको आईना भी दिखाया जाएगा और इनकी खिलाफत भी की जाएगी। और देखिए ये लोग ये भूल जाते हैं कि 3 अदालत में जवाब देना पड़ता है। एक जो कानूनी कार्यवाही है, जो हमारी देश की अदालतें हैं, वो तो है ही है, वहां पर तो ये अब फंसे हैं। दूसरी जनता की अदालत है, और तीसरी ऊपर वाले की अदालत है। 3-3 अदालतों में आपको जवाब देना पड़ता है। ये चीज ये भूल जाते हैं, क्योंकि कुर्सी इतनी पावरफुल चीज है ना कि उसमें बैठते अच्छे अच्छों के दिमाग घूम जाते हैं। तो मलिक साहब का तो मतलब सिलसिला ही ऐसा रहा है। मुझे तो अब यह आश्चर्य हो रहा है कि एनसीपी वाले आज उनके यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। अब उसका कारण ये है कि अब उनको लग रहा है कि सुबह सुबह उठे बिना हाथ मुंह धोए हुए, बिना चाय पिए हुए कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन लिखेगा ट्विटर में झूठ बातें, कौन मतलब इनके इनके जो ये झूठे घटिया फेक नैरेटिव्स होते हैं उनको पेडल करेगा, कौन करेगा। और अब लगातार एक के बाद एक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त हम सब लोग जब ये लाइव कर रहे हैं, उस वक्त जो है पवार साहब के घर में तो मीटिंग खत्म हो गई है, और अब जो है मातोश्री के अंदर मीटिंग चल रही है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और किस प्रकार से इस पूरे किस्से से बचा जाएगा। लेकिन बचने वाली तो बात ही नहीं है। बहुत बहुत ही मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे पता था आज सुबह जब 5 बजे ईडी इनके घर में पहुंची और उसके बाद ये धरे गए, और उसके बाद 7:40 में ईडी के दफ्तर में इनको लाया गया और बोला गया कि थोड़ी कॉफी वॉफी अब आप ईडी के साथ भी पी लो, थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप थोड़ी यहाँ भी कर लो। तो उसके बाद जब इन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 घंटे की करी उनके साथ, तो ये पाया गया कि इनके कनेक्शन, आप सोचिए, इनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डी कंपनी के साथ है। अब ये जो विषय है ना, ये विषय चोरी चकारी उगाही का नहीं है, ये विषय है देश के खिलाफ खड़े होने का। ये जो इनका क्राइम है, ये माफी के लायक क्राइम नहीं है, ये इनकी वो गलती है जिस गलती के लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी डी वर्ल्ड के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ, डी कंपनी के साथ इनके कनेक्शन, और वहां से भाई साहब ने खरीद ली जमीन उन लोगों से जिन्होंने मुंबई दहलाया था मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट के माध्यम से।
मुंबई को दहलाने वाले लोग, जिनकी जिनकी पूरी जमीन टाडा के पास, टाडा के उसमें चली जानी चाहिए थी, इन्होंने खरीदी क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, उनको ये बेनिफिट दिला रहे हैं। आप सोचिए, ये मतलब ये कोई नेता करेगा? मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कभी भी करेगा? किसी कोई सोच सकता है ये सारी चीजें? और अब ये ये रो रहे हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट रो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए ईडी आई और ईडी ने मेरे से समन भी साइन नहीं करवाया, ईडी ने समन भी साइन नहीं कराया, मुझे ममता जी, मैं जबरदस्ती एक घसीट के ले गए। बात बोलना चाहूंगी. I would like to put forward one thing. I जी have यहाँ पर first time in my life, I have never seen even the mafia rules are don't touch women and children. मैंने जी ऐसे किस्म का पॉलिटिक्स मेरे मातृभूमि, मेरे महाराष्ट्र में नहीं देखा. I have never seen such kind of politics. करो करो तुम करो, if you find something, go to the court. प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन आपने मैंने कभी पर्सनली किसी ऑफिसर का, किसी ऑनेस्ट ऑफिसर की वाइफ को ट्रोल होते हुए, उनकी फैमिली को ट्रोल होते हुए, उनकी बहन के फोटोज नेशनल टीवी पे लगते हुए वेकेशन के, मैंने पर्सनली नहीं देखा. दिस हैड गॉन रियली बिलो द बेल्ट एंड इट वाज गिविंग अ रियली बैड मैसेज टू द होल सोसाइटी. And ये एक when they even the dirtier people will not take the wife and the children in between. Here our आई children have suffered, कंप्लीटली अग्री। and very badly that our children have suffered. Here our whole people have suffered around us. Our relatives have suffered. Looks like okay. We've Yeah, lost the she's back. Yeah, connection. No, yes, she's I back, lost she's the back. connection. Probably I Yeah. was so much, it's like I would like to say this was so bad, and still the fear is still there. My children's fear out to go to step out normally. I cannot explain them. I cannot tell them that this is not right. Okay, फिर से You लगता know, है we lost her connection. yeah. So Uh, it was like I would like to plead the leaders from this medium के यार अपनी जंग है, अपनी चीजें हैं. तुम एक एक ऑफिसर को यू वांट टू आस्क थिंग्स, प्लीज गो लीगली आस्क. इंक्वायरी सेटअप होती है या ये सब. डोंट डू ऑल दिस. दिस इज You know, ये completely बहुत ही दिस इज वेरी. आई वुड लाइक टू ओनली पुट अप सब जुडाइस मैटर है. Even if you tell him what is your feelings about it, I am frankly telling you, I am naive, I'm numb. Meko koi, I'm not happy, nor I am like, oh, very sad about it, or I'm very happy. It is just what the judiciary system or whatever the agencies have done it. It is done. It is their decisions. We are nobody to talk about it. And still, as wrong, bad human beings, I will not go and blast on, media ke acha hua, jo hua, wo so. I am not that kind of a person. Nor my brother is, and nor my bhabhi is. We still are good human beings. We still have the ethics. Oh, and I want to convey this, that please be a good human at least. Don't go hit below the belt where a woman is tortured with her children, where a woman is tortured with two small twins, एंड वेर यू आर पुटिंग ऑन जो मिल रहा है, बहन मिल रही है, बीवी मिल रही है, तुम एक गंदे पॉलिटिक्स कर रहे हो. दिस दिस विल नॉट बी टेकन. This will not be taken. If till the time I die, I will stand to cut my neck, but I will not take this. Nor any of my family member will take this. नहीं, absolutely. और Yasmin, absolutely. yeah, sorry, go ahead, Mamta ji. बोले हम. No, no, all I want to tell Yasmin ji is that, Yasmin ji, we understand what pain you all have gone through. We've seen that, we've seen it all. And And let me tell you this. what he's not done, what it is, it's 27 years old matter. We have cases pending in the court where a 12 years old raped girl is not getting justice. We are standing every day, we are fighting, we are day to day. 27 years old case, you are when he was not even a major. What is the need when he has not done it? I would like to prefer it like that. I would see it legally on the legal corner. He was a minor at the time of it. So, but
whatever the judiciary system has, we've got wonderful judiciary system in India. But as a lawyer, I just wanted to convey what is not done, which is actually not done. आपको कुछ नहीं मिला. आपको मतलब यहाँ से कुछ नहीं मिला, वहां से कुछ नहीं मिला, करप्शन भी कुछ. मैं probably I was speaking this to like my family, that they cannot believe that there can be an honest officer who can really work this way. Yeah. But True. probably the height of the level is like that. They cannot believe that a person can even really work this way. तो उन लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा आदमी भी कर सकता है. So No, somebody can what you said is fight for the truth. absolutely So correct. it's like they couldn't understand the criteria of working honest. Exactly. Like And for Yasmin, example, when he spoke about me, he was like, I don't want to give any personal views, but ये पूरी आर्मी थी, ये पूरी टीम थी, वो गाही कर रही थी. मैंने कभी भी अपने खिलाफ ऐसे वर्ड्स यूज ना ही सुने, नहीं करने का तो बहुत दूर की बात है. आई एम अ वेरी लाउड पर्सन. अगर मैं करूंगी तो दूर छुप तो नहीं सकती हूँ. आई एम अ वेरी ह्यूज एंड अ लाउड पर्सन. So and we don't like to keep our heads down. लेकिन I was shocked to hear this, and for them it was so normal. For using a word known as उगाही, इतनी गंदे शब्द का उपयोग करते वक्त उनको बिल्कुल शर्म नहीं आई. नहीं, आप शर्म So की बात कर नहीं, रही हैं मुझे यास्मीन जी. शर्म आ गई सुनकर. Exactly. No, they've not left your dead mother. Sorry to say that. But अगर Yeah, वहां that's उनको true. नहीं, नहीं इतनी छोड़ा. इतनी प्रॉब्लम आपको कहाँ हो रही थी, क्या हो रही थी इतनी प्रॉब्लम कि आप मेरी मॉम के लिए यू Exactly. हैव वी ऑल नो इट वाज अ पेड पीआर. आई वाज गेटिंग ट्रोल्ड ऑन इंस्टाग्राम. द वे आई विल नॉट रिमूव एनी ऑफ द कमेंट. I will keep it forever there. Yeah. I will, and of course, I am. We are also having our own dates, and we are fighting for it. I have also lodged a complaint in the magistrate court for defamation, for stalking. But it is very unbelievable. As so many years that I have passed, I've seen, I've been there. But this kind of politics from such a person who is sitting on such a seat, I respect his seat. Yeah, I could have done better. There are people who have done better for them. What is his work? A minority. He is a minister for the minorities. For the skill development, would have worked there better, in a better manner. Then to get over this, the behind the whole family, and to go below the belt and hit there. बिल्कुल. That I refrain. I tell, that is why message I want to say, that every people are not as strong as us. We have suffered, and I hope that nobody suffers like us. बिल्कुल. Please go ahead, Can Mansi. I just Nishwata, Hello, hi Didi. All right. Good evening. Good evening, good Shweta? Didi. evening. How are Right. you doing? Hi. श्वेता को भी अभी मौका दूंगा. मैं चाहूंगा ममता जी अपना वो जो थॉट प्रोसेस थी प्लीज ममता जी बोले and then हाँ, we'll next. नहीं, all I want to say is that what just now Yasmin ji has said, that the MVA का फुल फॉर्म जो मैंने दिया है, जो मैं 2 साल से बोल रही हूँ, वरुण इज अवेयर ऑफ इट, महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार. और ये जो है ना, 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार है. So this government is really not used to honest officer. What you said is absolutely correct. They are used to Paramveer Singh, they are I used to think Sachin Waze, they are used to Riaz Kazi. तो obviously अगर एक ऑफिसर मुंबई की धरती पर बैठ करके जिम्मेदारी के साथ, बिना किसी से डरे हुए, मुंबई बिना की झुके धरती, हुए, वी आर ऑल्सो अपनी मुंबई कर. जिम्मेदारी हम से लोग भी काम कर रहे छत्रपति थे. शिवाजी महाराज की. वी आर ऑल्सो पीपल कमिंग फ्रॉम the land of छत्रपति शिवाजी महाराज. We are also Maharashtrians. We are also from Mumbai. Very much the bloods are there in the soil. I am as much as Marathi. So it is Absolutely, only a absolutely. certain person who has created all this, No, it's not. You and know what, he Yasmin? has dared to put that on Twitter, on the medium, and he couldn't believe probably कि कोई ऐसा honest सच्चाई से भी इंसान हो सकता है जो सच्चाई से लड़े. It is unbelievable for them. The only reason I ask myself later on कि ऐसा क्यों क्या गया, तो यही रीजन आता है मेरे सामने कि शायद he did not believe कि कोई ऐसा भी हो सकता है. Correct.
राइट। नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा, ममता जी को हमने बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, नॉट ओनली फॉर सुशांत, इवन समीर के लिए कई बार बोलते हुए देखा है, सुना है। एंड आई थिंक इट इज रियली ऑल कमिंग टू अ पॉइंट जहां पर हम सब लोग बिलीव कर रहे हैं कि इवेंचुअली एवरीथिंग विल हैपन द वे वी वर होपिंग इट, कि जिस तरह से हम कहते हैं हमेशा कि सत्य की जीत होती है, तो ये लग रहा है कि इवेंचुअली वी आर हेडिंग, यस, द जर्नी वाज टफ, वाज डेफिनेटली टफ, और अभी भी, लाइक यास्मीन जी व्हाट यू सेड, अभी दिस इज नॉट द एंड, अभी भी है, देर आर सर्टन मोर हर्डल्स, बट आई थिंक द वे ईच माइलस्टोन जैसे आ रहा है, we are really very very happy that this is going in the right direction, and I'm sure with all the people support, support from people on the mainstream media, everybody, I think सत्य की ही जीत होगी। कुछ और आप कहना चाहेंगी ममता जी बिफोर आई टेक श्वेता? नो दैट मैंने जो भी एक्चुअली बोलना था वो बोल दिया, बिकॉज मुझे ये खबर बहुत अच्छी लगी आज, जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि Right. जब कोई गलत व्यक्ति, खासतौर पे जो देश के विरोध में खड़ा हो, जो सच्चाई का दमन करता हो, जो सच्चे लोगों का दमन करता हो, अगर वो पकड़ा जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है वरुण जी कि मैं अपने शब्दों को कहीं पर भी मिन्स नहीं करूंगी। मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि गिरफ्तारी आवश्यक है। उन लोगों की गिरफ्तारी बहुत आवश्यक है जो देश को तोड़ रहे हैं, अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी पार के लिए। तो ये नहीं चल सकता भाई, ना महाराष्ट्र में चल सकता है, ना भारतवर्ष के किसी कोने में चल सकता है। आज ये लोग पॉलिटिकल वेंडेटा रो रहे हैं। काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा? किस बात का पॉलिटिकल वेंडेटा? ईडी के पास सबूत हैं, ईडी ने कंप्लीट इंटेल के बाद पूरी प्रोसेस किए हैं, 10-10 छापे मारे हैं। उसके बाद सारे सबूत लेने के बाद ईडी घर में जाती है, इनको लेके आती है, 8 घंटे की पूछताछ के बाद And I गिरफ्तारी wouldn't होती call है। it a तो यहाँ political कौन सा vendetta. पॉलिटिकल वेंडेटा है? We did not know it. We, so frankly नो, saying, from Wankhede family, if you want to hear, we did not know it. What political vendetta? I mean, yes, from that side, I don't know. But we are fighting our own wars. We are giving validations नो, for नो, दिस आई एम all the टॉकिंग inquiries अबाउट which are. नो, दिस पॉलिटिकल वेंडेटा इज यास्मीन, ये पॉलिटिकल वेंडेटा की जो बात कर रहे हैं वो आज वो लोग एनसीपी और तमाम वो लोग कर रहे हैं जिनके नेता की गिरफ्तारी हुई है। सो दे आर क्राइंग पॉलिटिकल वेंडेटा। वो लोग पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे हैं कि कैसे गिरफ्तार कर लिया, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, हमारे अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शंस नहीं है, तो भाई हमारे साथ जो है ये विच हंट हुआ है, पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ है। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हुआ है। जो गलत किया है, अगर आप मिनिस्टर हैं तो क्या फर्क पड़ गया? आपने अगर गलत किया तो आपकी गिरफ्तारी तो होगी ना। एंड एज फार एज मिस्टर समीर वानखेड़े इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, पूरा देश उनके साथ है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, जितने भी लोग पैनल में हैं, वी स्टैंड Thank विद द you. फैमिली। एंड आई It was अश्योर यू always कि that you stood आखिरी like तक a हम आप family. लोगों के साथ रहेंगे, आखिरी तक आप लोगों के साथ रहेंगे। और एक इस देश के ईमानदार अफसर है मिस्टर समीर वानखेड़े, बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और बहुत ईमानदारी और बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने उन उन लोगों के खिलाफ काम किया है जो गलत थे, फिर चाहे वो कोई भी थे, नेता थे, अभिनेता थे, कोई भी थे। तो ऐसे ऑफिसर्स की इस देश को जरूरत है यास्मीन जी, एंड हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब भी किया था, अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन अगर कोई टेंटेड लीडर है, कोई गलत नेता है, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, भाई साफ सी बात है उनके खिलाफ बोला जाएगा, और उनके जो भी गलत कृत्य हैं उनको डेफिनेटली उजागर भी किया जाएगा। उसके लिए ये लोग ट्रोल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग तंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ जाएगा? कितना कितना आप किसी को ट्रोल कर सकते हो, कितनी आप बुरी बुरी बातें बोल सकते हो। एज यू सेड, वीव सीन इट ऑल, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट योर Bhabhi has gone through, what Uncle Ji, that's your dad, has gone through, what Mr. Wankhede has gone through. I mean, you all have gone through so much, and हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को, क्योंकि सच्चाई के साथ गलत चीज के ऊपर वार हो रहा था, तो वो चीज पची नहीं। क्योंकि ये होता है ना कि जब ईमानदार अफसर से ऐसे बेईमान नेता का सामना होता है तो वो डर जाता है, उसको ये लगता है कि अब तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो अब क्या करेंगे? अब झूठ बोलेंगे, एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, उसको पेडल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे लोगों की पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल इमेज को, और उसके बाद जीतने की कोशिश करेंगे, पर नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, ये नहीं होगा। और आज जो ये गिरफ्तारी हुई है उसने एक बार साबित कर दिया है फिर से कि गलत अगर आप हो He had और got too हाशिए पे हो personal.
तो आप पकड़े कोई जाओगे। सेंसिबल इंसान इतना पर्सनल नहीं होता। दैट इज ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल नहीं होता है। इतना सेंसिबल हमको तो फर्क होता ही पर नहीं पता है। होता है, इतना सेंसिबल, इतना कोई सेंसिबल इंसान इतना पर्सनल नहीं होता। पट राइट, अलग जगह, कुर्सी अलग जगह, पॉलिटिक्स ओके, इनका नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है। से इतना इतना नहीं गिरता है, इतना नहीं गिरता, कोई भी नहीं गिरता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। I wouldn't refrain this time, but the words like कोई भी इतना नहीं गिरता, बिलो द बेल्ट नहीं मारता। या दैट इज जहाँ ट्रू। पर तुम, I was shocked whenever I'm sitting, I think, I reflect about it, reflection होता है, लेकिन I mean सिग्नल गया फिर से। सिग्नल चला गया, हाँ जी। Yeah. बट ओके, इट्स बैक। हाँ जी, आई थिंक यास्मीन जी थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। बट एनीवेज, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ममता जी, आई नो आपका एक और अभी सेशन है थोड़ी देर में, सो ये I लास्ट have मिनट one ज्वाइन। session, then have another debate. ओह वाओ, So yeah. कीप रोरिंग, मैं यही कहूंगा। थैंक यू सो मच, एंड मैं Most इतना welcome. जरूर चाहता था Anytime, दिस Varun. वाज। You are doing such a great job. I'm sorry, maybe I'm speaking over you, but let me tell you, you are doing a great job. You've been fighting all these battle, and I am always there with you. Yasmin ji, we are there with the family. I, as thank an you, individual, is always there with you all. आप सब लोग thank you बहुत so हिम्मत much, वाले Mamta हैं, ji. बहुत सच्चे हैं, माँ भारती के सच्चे लोग हैं। हम सब आपके साथ हैं और बिल्कुल जीत होगी ना। एंड आई एम सॉरी, मैं Thank you, Mamta ji. बीच में Thank you. चली Om जाऊं तो Namah मुझे माफ Shivaya. कर। बिल्कुल बिल्कुल, ओम कोई नमः चक्कर नहीं, शिवाय, ओम आपके नमः शिवाय। प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Take care and Thank you. see you Thank all you, soon. Mamta ji, Bye. so much. Thank Thank you. you, Mamta ममता जी, ma'am. एक चीज आपको हाँ बस जी, कहना था ममता जी, कि इस जी बार जी। जो ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैं समझ सकता हूँ आपकी समय की बाध्यता रही होगी, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शायद टाइम से नहीं मिला होगा, लेकिन अगली बार आपके पास अगर आप समय रहे, प्लीज ग्राउंड प्रोटेस्ट में आएगा, क्योंकि आप जब आती है तो एनर्जी फिर अलग लेवल पे और भी आ जाती है, तो प्लीज Is आइएगा। that Rudra? हाँ जी, रुद्र। या Yeah, अच्छा, हाय Rudra. रुद्रा, एंड आई एम सॉरी, मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, मैं नाम सबके नहीं पढ़ पा रही हूँ। हेलो, यस, मुझे प्रोटेस्ट की इंफॉर्मेशन कपिल से भी और वरुण से भी, दोनों से मिली थी, बट आई वाज आउट ऑफ दिल्ली। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। सो यस, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, सो आई विल ऑब्वियसली बी देयर। या I will be यू there, डोंट हैव टू and टेल we are इट। together in each and every एग्जैक्टली, fight. So yeah, थैंक I यू। will be there, and अब मैं आप लोगों से इजाजत लूं। श्योर, सी यू इन सम Thank you टाइम। so much, थैंक यू Thank सो Mamta. मच। you. टेक केयर, ममता जी। Thank you, Mamta जी, ma'am. ऑलराइट, बाय, टेक केयर, बाय Thank बाय। you. श्वेता प्लीज गो अहेड। Good evening, Varun ji. Good evening, Yasmin ma'am, and good evening, Shalini Rudrubha. So, Good this news evening, was Shweta. good evening. This news was really astounding and it was a happy news. We woke up with this news ki ED ने pick कर लिया है and so on so forth. We were waiting for the arrest to happen. Certainly वो हुआ and we were hoping कि वो आज होगा या नहीं होगा. वो हुआ भी आज and कर्मा जिसे कहते हैं, कर्मा हिट्स बैक, कर्मा नेवर लूजेस एड्रेस. तो ये जितने 4 साढ़े 4 या 5 महीनों से जो चचा जान ने प्रताड़ित किया है एक ऑनेस्ट ऑफिसर की फैमिली को, समीर सर को हिमसेल्फ जितना प्रताड़ित किया है, सो उसका भरपाई अब ही हैज टू पे एवरी बिट ऑफ व्हाट ही हैज डन. He has crossed all the limits, but now he has to pay back. It's time up for him. And as Mamta ma'am said, we stand by the family, we stand by you all. We would be there all the time, Yasmin Di. So we are there and we will keep roaring for the truth always. Thank you, Varun ji. ऑलराइट, थैंक यू श्वेता। एंड Always, yes, you people were always there. We were always, you always knew क्या हो रहा है. Yes, तो yes, yes. behind the back. लेकिन इस वक्त मैं ये स्टेटमेंट, इट्स सब जुडाइज, तो उसे मेरा उसके अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है. और इट इज लाइक, ना मुझे खुशी महसूस हो रही है, ना मुझे दुख महसूस हो रहा है. इट्स समथिंग अननोन. मैंने पर्सनली लिया नहीं है उनको. आई विल नॉट प्रिविलेज हिम टू लेट हिम एंटर माय फैमिली जोन. लेट हिम एंटर माय हेड एंड माय हार्ट.
I have not privileged him of that. Great. I deny the privilege. So मुझे किसी से शिकायत भी करनी हो तो वो मेरा अपना होना चाहिए. सो और मुझे किसी को अगर मुझे किसी की तारीफ या मुझे किसी के ऊपर खुशी भी होनी चाहिए तो वो मेरा अपना होना चाहिए. आई विल नॉट प्रिविलेज हिम ऑफ द हैप्पीनेस नॉर ऑफ गेटिंग एंग्री. आई डोंट प्रिविलेज हिम ऑफ एनीथिंग. So I don't even bother that he's arrested, he's not arrested. Wow, we will walk, the Wankhede family will walk on the judiciary, whatever the law says, as with the judiciary system. श्वेता, ये बताना मुझे बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जी लोग समझ रहे हैं कि बहुत वानखेड़े फैमिली खुश हो गई है या बहुत ये कर रही है, हमारी हार हो गई है. ना 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 ना, we do not privilege him that much to let him enter our walls of the house. We do not get एब्सोल्युटली happy or we do not get sad. ये एक प्रिविलेज है तो जो तुम देते हो किसी अपनों को. या जो गलत बात है वो हम कोर्ट में जाके लड़ेंगे, उसके लिए जिंदगी भर तक लड़ेंगे. और जितनी जिंदगी मेरी, जी एटलीस्ट आई विल फाइट, भाई विल फाइट, एवरीबडी इज गोइंग टू फाइट. वी आर फाइटर्स, वी आर बॉर्न. हम लोग योद्धा है. या हम लोग ये नहीं सोचते कि क्या होने वाला है आगे या पीछे. हम लोग लड़ेंगे. जो जो हमारे ऊपर जो उछाला गया है, वी विल फाइट. बट अनदर वे आई वांट टू आल्सो इवन कन्वे भाई कि बहनों और बीवी और बच्चों पर मत जाना या और बिलो द बेल्ट मत जाना. मैं एक स्ट्रांग औरत हूं, लेकिन अगर इस जगह पे कोई स्ट्रांग औरत नहीं होती जिसका मीडिया में फोटो आ जाता जहां पर नीचे लिखा है कि तू मुसलमानी है, तेरे कपड़े दिख रहे, तुझे काट देना चाहिए तेरा गला, वो नहीं ले पाएगी. शी विल नॉट बी एबल टू टेक इट. जिसकी पीआर मीडिया ट्रोलिंग होती है, तो डोंट स्टूप सो लो, इतना बिलो द बेल्ट नहीं. एंड आई डोंट वांट टू प्रिविलेज एनी ऑफ देम के वो अरेस्ट हुआ, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं. आई केम टू नो एज जैसे हर नॉर्मल पब्लिक विल कम टू नो विद द न्यूज. या So, वो तो सब जुडाइज मैटर है. और जो एजेंसीज किया है तो वो ऑफ कोर्स सामने, तो अगर आपने किया है तो सामने तो आपके आएगा. सो एज एडवोकेट आल्सो आई से द सेम थिंग दैट इफ यू हैव डन इट, इट विल कम. और सत्य की जीत ही होती है, सत्य में विजयते. द फर्स्ट थिंग ऑफ माय ब्रदर वाज सत्य में विजयते, एंड द लास्ट थिंग विल बी दैट. एग्जैक्टली. और मैंने वही बताया, राइट, कि जब ये न्यूज आई थी और मैंने एक छोटा सा मैसेज भेजा था, the humility of this family, this is what brings us closer to you guys. कोई सेम चीज आपने बिल्कुल सही कहा. यू एंड योर ब्रदर लुक्स लाइक यू आर लाइक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच अदर. कोई इमोशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और सिर्फ इतना सत्य में विजय थे. दिस इज ऑल ही हैड टू से अबाउट दिस. कि and we all believe now कि हमेशा eventually सत्य ही जीतेगा. So really proud of how you have handled this, and I'm really हम सब लोग आपके साथ हैं. We are really vouching that आगे भी कोई भी ऐसी nonsense कोई create करेगा तो we will fight it out. मेरी दिल से एज बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे वरुण, मेरी दिल से सबको एक पुहार है. अगर वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखो औरतें और बच्चों को इन्वॉल्व मत करो. Right. आपके पर्सनल इश्यूज हैं, आप सॉर्ट आउट करो. कोर्ट में Yes. जाओ, जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट है, वी सोल्जर्स ऑफ द लॉयर्स हैं. प्लीज, मतलब छोटे बच्चे मैंने देखा है, भाई भाभी फीडिंग देम, फोन कॉल्स आर कमिंग. तुम किसी को, एक ऑनेस्ट ऑफिसर को, यू कांट यू कैन नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट. यू कैन नॉट, ही डजंट डिजर्व इट. True. और आगे से रिफ्रेन करें, क्योंकि अगर कोई इंसान स्ट्रेंथफुल और ऐसे बोलता है ना, वी हैव दैट योद्धा दिमाग, वी हैव वो दिमाग है हमारे अंदर. वी आर छत्रपति शिवाजी महाराज, वी जनरेशन, वी आर ऑल्सो महाराष्ट्रियंस. वी विल डाई बट वी विल फाइट फॉर जस्टिस. सही कहा आपने. ऑलराइट, मैं और चाहूंगा फिर वो नहीं देखते फिर कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, और कितना कोई स्ट्रगल. माय किड्स कम टू मी, वरुण, एंड दिस लाइक, मम्मा, व्हेन दिस विल बी ओवर.
Mummy, we're scared. Where are you? Have you eaten? You'll feel sick. Where is this? Where is that? I'm a single woman. I'm a single parent. Yeah. So I have to answer those kids. I see fear in their eye. And I said, Mama, somebody had come in my, colleges have heard to that level. Varun, you don't know what I have gone through, or everybody in my family has gone through. That there have been questions, they have been asked, some people have come. I have been, of course, I've been reporting and I have been complaining it yet. बट एक माँ का डर अलग होता है. बिल्कुल एक बिल्कुल. माँ का डर एक दूसरे लेवल पे होता है. आई थिंक माई भाभी ऑल्सो हैज वेंट थ्रू दिस, कि 10 बार सोचना कि बच्चों को अलग ना रखो, छोड़ो नहीं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये प्रेस आ रही है, मीडिया आ रही है, वो सवाल करिए आपसे. एक मीडिया ट्रायल पे चले गए थे एक किस्म के, कि वेर वी वर क्वेश्चन, बताइए आप ये क्या है, बताइए वो क्या है, या Right. मतलब क्यों बिना मतलब के. मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर आई एम गोना पॉज एवरीवन बिकॉज वी हैव अनदर अमेजिंग ओरेटर जिन्हें हम सोशल मीडिया ऑनलाइन में लेडी सिंघम बोलते हैं. समीर वानखड़े जब आए थे उनके साथ ये मेरे साथ बैठ के इन्होंने जिस तरह से हैंडल किया था और क्वेश्चंस लिए थे वाज अमेजिंग. एंड देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड. इनकी आवाज भी कई बार जा चुकी है क्योंकि ये इतना जोर से दहाड़ती हैं समीर के लिए, सुशांत के लिए, कि इनकी आवाज भी बंद हो जाती है कई बार, बट ये हटती नहीं है. और आज भी शी इज बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, but she made time for all of us, and especially I think for you, Yasmin. So without wasting time, I'm थैंक going यू to सो put her मच. on the screen. Namaste, Preeti ji. जय हिंद, जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद सभी को. जय हिंद यास्मीन जी, कैसी हैं आप? जय हिंद, जय हिंद. देखिए, आप खुद जय वैसे हिंद। शेरनी है, आपको परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शेर की बहन है, ये भी एक परिचय है. शेरनी आप खुद हैं, लेकिन शेर की बहन है, ये भी एक बहुत बड़ा परिचय है. मैं कोलकाता में हूँ और नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, बस डिबेट करके he is उठी हूँ, very तो अभी timid. आपका मैसेज He आया. doesn't speak much. He's very timid. He doesn't speak much. I am more Vocal. aggressive. नहीं, but thank you. हाँ जी, बोले प्रीति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? Thank you वरुण so जी, much, बस Preeti ji, डिबेट हमने अभी की 6 से 7 का. वेलकम. 6 से 7 का हमारा टॉपिक ही यही था, क्योंकि देखिए कर्मा रिटर्न्स हम तो बिलीव करते हैं, और मुझे याद है कि जब समीर जी पे सारे ये ड्रामे रचाए जा रहे थे, तो मैंने आज डिबेट में सिर्फ ये कही कि जो लोग दूसरों की जाति प्रमाण पत्र ढूंढते थे, आज ईडी ने उनकी खुद की कुंडलियां खंगाल ली. क्योंकि जिस तरीके से एक ऑफिसर को फंसाने के लिए, वो कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, उनके परिवार में कौन क्या है, सारे ड्रामे नॉनसेंस जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. और किस तरीके से उन लोगों का खुद का अंडरवर्ल्ड के साथ, डी कंपनी के साथ किस तरीके से जमीन बेची खरीदी गई. 3 एकड़ की जमीन 20 लाख रुपए में बेची गई है. डी गैंग के इतने बड़े माफिया आतंकवादियों की बहन के साथ मिलके किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को मुंबई में, महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है. यही तो कारण है कि शायद अंडरवर्ल्ड का खात्मा इसलिए आज तक नहीं हो पाया मुंबई से, वरुण जी, क्योंकि खुद सत्ता में बैठे बहुत बड़े बड़े लोगों के पास शायद इसके शेयर जाते रहे होंगे. थैंक्स टू ईडी. और सब ईडी को भी थैंक यू कहने के पहले वरुण जी, थैंक यू टू सुशांत सिंह राजपूत. क्योंकि जो लोग ये बात बार बार ये सवाल उठते हैं, हम लोगों से, ममता काले जी से बार बार पूछा जाता है कि आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत पे इतना चिल्लाया, इतना गला खराब किया, लेकिन क्या हुआ. तो अब ये आज जो एपिसोड हुआ है, जो ईडी ने बिना सम्मन के घर से उठाया है, तो ममता जी भी मेरे साथ डिबेट में थी, मैंने यही बात बोली. मैंने कहा ममता जी को नहीं उठा रहे, हमें नहीं उठा रहे, एंकर को नहीं उठा रहे, और बड़े नेताओं को नहीं उठा रहे, उन्हीं को लेके ईडी जा रही है, या उन्हीं के खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है, जहां कुछ ना कुछ इस तरह का मामला पाया गया है. और यही शायद कारण है कि वरुण, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जो डिले है, या जो डिले हो रहा है, सब लोग, सारी एजेंसियां अपना काम करें. विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस देश की जो अदालतें हैं, जो न्यायपालिका है, वो अपना काम करेंगी, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो भी अपना काम कर रही हैं. लेकिन बार बार कहती हूँ, फिर कह रही हूँ, चाहे समीर वानखेड़े जी रहे हो, चाहे अर्नब गोस्वामी रहे हो, चाहे कंगना रहे हो, चाहे सुशांत के केस में, अब हमें समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं. और अगर हम इनको हल्के में लेते हैं और ये सोचिए, वो लोग हैं जो 50 साल से इस देश में सत्ता की मलाई खा के बैठे हैं.
अंडरवर्ल्ड की जमीनें जो आदमी खरीदता बेच रहा हो, सोचो कितना बड़ा आदमी है, किस तरीके से वो देश आज जो हो रहा है वो सुरक्षा के खिलाफ भी है, देश की सुरक्षा के खिलाफ है। इट इज नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री, इट इज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो बिल्कुल सही। लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे आज उस गड्ढे में खुद घुसे हैं, खुद गिरे हैं। और सबसे शर्म की बात है कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में वरुण जी, मतलब बारीकियों में बता रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग जस्ट स्टडी कर रहे थे डिबेट से पहले, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो आरोपी हैं उनके ऊपर Yeah. टाडा केस लगा था। टाडा लगने के बाद क्या होता है कि जो संपत्ति है आपकी, वो संपत्ति जब्त कर लेगी गवर्नमेंट। तो वो संपत्ति जब्त ना हो आरोपियों की, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उनकी संपत्ति को बहुत बड़े बड़े नवाब इस देश के जो हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि नवाबगिरी चली गई लेकिन खुद भी आज को अपने आप को नवाब मानते हैं, उनके परिवार के सदस्य के द्वारा बनाई गई एक कंपनी ने सारी जमीनें उनकी खरीद ली थी आरोपियों की। यहाँ लोग मर रहे हैं बम ब्लास्ट में, लोग अपने माँ बाप भाई बहन खो रहे होंगे, परिवार पति बच्चे खो रहे होंगे, वहां उनकी संपत्ति बड़े बड़े नेता इस देश के खरीद बेच रहे थे। और बॉम्बे जैसी जगह में जहाँ 20 लाख 25 लाख की झुग्गी नहीं, झोपड़ी नहीं मिलती, वहां पे 35 लाख 40 लाख में पूरी पूरी 3 एकड़ की जमीन खरीद ली है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू ईडी कितना जबरदस्त काम कर रही है, जिस तरीके से समीर वानखेड़े की टीम काम कर रही थी, समीर जी ने काम किया, सीबीआई अपना काम कर रही है। और ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे थे, आज भी ये बहुत सारे लोग सेंट्रल एजेंसीज को घेर रहे थे। तो मैंने भी ये कहा कि जब देश के इतने बड़े पत्रकार को सुबह 6 बजे उठा लिया जाता है बिना सम्मन के, तब आप कुछ नहीं बोलते। कुछ प्रदेश, कुछ शहर की पुलिस नेताओं के इशारों पे नाचती है, तब भी आप कुछ नहीं कहते, तब वो जायज होता है। लेकिन जब समीर वानखेड़े पे हमला हो, सुशांत के केस में ड्रग्स को लेके, चाहे अर्नब गोस्वामी को उठा ले, चाहे कंगना के घर को तोड़ दें, तो वो सारा नाजायज हो जाता है। तब एक ही चीज कहने को मिलती है कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो सरकारों के इशारे पे काम कर रही हैं। आज जो प्रकरण हुआ है वरुण जी, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इस देश के जो नेता हैं, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीबी हो, दुनिया भर की कोई पार्टियां हो जो हमारे देश में चल रही हो, किसी को अधिकार नहीं है कि जब हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादियों के जमीन को खरीदा जा रहा है। हमारे कितने बेशर्म नेता हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। इस्तीफा तो छोड़ दो, इनको जीवन भर जेल में रखना चाहिए और इतनी इनकी पिटाई होनी चाहिए ना कि ये अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहे। क्योंकि इनको देख देख के ही हमारे यहाँ के युवा इनके फैन फॉलोइंग कर, इनको फैन इनके बन जाते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको अपना माई बाप समझने लगती हैं। ये इनका अधिकार नहीं है कि हमारे वोट से इतनी बड़ी भी राजगद्दी पे बैठे वरुण, नॉट मतलब इनको जेल में होना चाहिए और इनकी रोज पिटाई होनी चाहिए, कायदे से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, होनी भी चाहिए। और मैं तो चाहूंगा अब एक एक केस क्यों, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं नवाब मलिक ने की है, और एक जो यास्मीन जी और सारी फैमिली बार बार बोलती है, इनकी पूरी फैमिली, वो बच्चे, वो डेड मदर, वो एक ओल्ड फादर जो बैठ के इस टाइम पे जिनका कुछ लेना देना चीजों में नहीं था, उनको सामने आके जस्टिफिकेशंस देनी पड़ी। इतना ज्यादा इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि कितना कुछ इनको सहना पड़ा जस्ट बिकॉज उनका बेटा या उनका भाई या आज उनका हस्बैंड। आज के एपिसोड में एनसीबी के एक नेता बैठे थे, वो यही बात कह रहे थे कि नवाब मलिक साहब को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो विशेष धर्म समुदाय से आते हैं और इस मुसलमान ना होते तो उनको टारगेट नहीं है। मेरा मन था ये बात कहने का, मैं चाहती थी, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि आपको पता है जब हम लोग सच बोलने लगते तो 5-5 हमारे ऊपर एक साथ चिल्लाने लगते। मेरा मन था ये कहने का कि आप लोगों ने भी किसी के परिवार को जब टारगेट किया था और किसी की मदर को टारगेट किया था जो आज दुनिया में नहीं है, तो शायद आप लोगों ने भी इसीलिए टारगेट किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो जिस लेवल की गंदगी ये करते हैं चैनल पे बैठ के, उस लेवल पे हम नहीं जा सकते। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये इनका पर्दाफाश हो रहा है, ये सामने आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि इस बार मतलब हम जनता की भी बहुत गलती है वरुण। मैं मतलब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी आज मैं देख रही थी चौथा चरण का इलेक्शन है, 59% वोटिंग हुई है। मतलब आप समझो कि लोग अपने घरों से निकल के वोट देने नहीं जा रहे। जनता की भी बहुत सारी गलती है, हमें जाके वोट तो देना ही चाहिए क्योंकि यूपी में इलेक्शन है और मैं यूपी में अभी पूरा कवर कर रही हूँ। और आप किसी को वोट देना चाहें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो आतंकवादियों की जमीनें खरीद बेच रहा हो। हम कहीं कल जाके उसको अल्पसंख्यक मंत्री तो नहीं बना देंगे, हम कहीं जाके उसको एमएलए एमपी तो नहीं बना देंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर 50 एफआईआर है, आरोप है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, वो दाऊद की बहन के साथ जमीन खरीद ले रहे हैं, बहन के जो ड्राइवर हैं सलीम पटेल, ड्राइवर और बॉडीगार्ड, उसके थ्रू क्या क्या ये लोग करते थे। हमें भी देखने की जरूरत है कि हम किस नेता को चुनते हैं यार, नहीं तो मतलब
सब सिर्फ ये नेताओं की गलती नहीं है, जनता की भी बहुत सारी गलती है। जब आप इनकी ये 20-20, 25-25 गाड़ियां जो होती है ना, जो उनका काफिला होता है, जिसको देख के बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं हमारे यहाँ के युवा, अरे इतनी बड़ी गाड़ी से आया तो बहुत बड़ा नेता है। ऐसा नहीं है। मतलब वो सोचिए कि जिस तरीके से वो आज देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि कल ईडी कुछ और पन्ने खोल दे और ये पता चल जाए कि ये 20 साल से तो दाऊद या डी कंपनी के कनेक्शन में है। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ ना, जो वो बॉर्डर पे बैठे ना, और हम जो जो हमारे अपराधी हैं या जो घुसपैठी हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं। जो हमारे बीच में बैठा ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो जो व्हाइट कॉलर्स माफिया और नेता हमारे बीच में बैठे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। यास्मीन जी, आप कुछ कहना चाहेंगी प्रीति जी के लिए, या प्रीति जी को? प्रीति जी, जो पब्लिक है ना हमारी, वो बहुत भोली है। वो उनको एजुकेशन, वी हैव लेस ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, तो बेचारे वो बातों में आ जाते हैं कि शायद कोई एक भला करके चला जाए। दे हैव ऑलवेज, दे रिमेन ऑन दैट थिंग, कि कोई एक आध भला करके चला जाए, कोई एक आध कुछ, सिचुएशन इज सो इमेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सही में हमको सही उनको ज्ञान देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए हमारे और आपके हिसाब से, कि सही लोगों को चुने और आगे ऐसे लोगों को ना चुने जो काफी हानिकारक हो। मैंने आपसे ये सब चीजें सुनी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन अभी बताई है, मुझे ये सब चीजों का नहीं पता है, मैं उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करती हूँ। सो वो द मोर नेगेटिव यू हियर, तो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताई है, मैं वो शॉक टू, कि इतना सब होते हुए भी ये किसी और की फैमिली पर, ये किसी और पर, ये इतने गंदे गंदे इल्जाम कैसे ला सकता है ये आदमी? विनाशकाल या विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। So I am shocked with मैं this. वही तो मैं कह रही हूँ यास्मीन जी, आज के एपिसोड में मैंने ये बात इसीलिए कही कि जो दूसरों के बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए, दूसरों के यूपीएससी के रिजल्ट्स निकाल के लेके आए, और कौन किस कमाल जाति है धर्म का सिंह, है, कमाल ईडी ने है। आज पकड़ा है। और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि कर्मा He रिटर्न्स। just done वरुण जी, its मैं कह work. रही हूँ, It's जो a डेढ़ very साल 2 साल prominent से हम लोग, agency, प्रीति। It's a very prominent agency, हाँ और हमारी एग्जैक्टली सब एजेंसी एग्जैक्टली prominent है। It's just the matter of how and when। हमारी काफी एवरी एजेंसीज आर prominent। और एक क्वेश्चन और मैं प्रीति जी, आई वुड लाइक टू डिस्कस कि ये सब जो चीजें हो रही थी विद वानखेड़े फैमिली, और विद कॉलिंग ओनली द ऑफिसर, विद मिस्टर समीर वानखेड़े, क्यों हो रही थी? और व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ दिस? जब भी कोई, मैं 10 लोगों के बीच में बैठती हूँ, मैं बोली, अगर मेरा बोलना ये है कि ऑन व्हाट इट वाज हैपनिंग, ऑन ड्रग्स इट वाज हैपनिंग। शर्म आती है आपको? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स हियर, we are talking about something which is not accepted neither by any political parties, neither by any religions। कोई कास्ट क्रीड है ही नहीं, यहाँ ड्रग्स है। ये किसी का दोष नहीं होता, इसकी कोई रिलीजन नहीं होती। So who are you stopping? A person who was catching drugs, a person जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के वो घुस गया, जो कोई नहीं कर पाया। We talking about gangs, we talking about जिसने अपने जान पे खतरे लिए। We talking about somebody headed like Mr. समीर वानखेड़े। हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? ये नेता, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनके बच्चों के किस बारे में बात कर रहा है? शादी निकाल रहा है। इट्स अ पर्सनल अफेयर, नहीं जमी भाई। आपको एक लीगल वे से, वी पास फ्रॉम अ लीगल प्लेटफॉर्म। कोई वो नहीं है, सब एवरीथिंग इज लीगल। तुम उसे नहीं। और इम्पोजिशन यास्मीन कर जी, रहे हो। हमें कोई समीर वानखेड़े जी के परिवार, उनकी मदर, उनके फादर, Nobody उनकी was interested. पिछले की Nobody शादी, was interested. जो हमें नहीं सेंसिबल जानना था इंसान है ना। ना, nobody was हाँ, interested. जो वो काम कर रहे थे, वो मैंने तो समीर जी को इसी प्लेटफॉर्म पे बोला था। मैंने कहा, समीर जी, मैं आज से पहले नहीं जानती थी कि एनसीआर, We all ये जो know him आपकी from that platform. हाँ, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अभी काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस तरीके से कभी काम कर सकता है या ऐसे भी बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। क्योंकि किसी की हिम्मत ने, आज बच्चे बच्चे की जबान में समीर वानखेड़े का नाम है, बच्चे बच्चे की जबान पे नारकोटिक्स का नाम है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है ना इस देश में कि कभी आप, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो अपराध कर रहा है तो हमारे यहाँ के ऑफिसर्स जाके बेचारे चाहते होंगे। मैंने तो ये भी कहा था कि आपने देखिए कर दिया ना, अब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग एक ऐसी जगह की जाएगी
सेंटिंग Yeah, I पोजीशन जिसको think हम कहते हैं। Priti ji, हमको felicitate करना चाहिए. If I would be the minister here, I would have felicitated him. I would have been happy कि मेरी एग्जैक्टली, लेकिन जगह बस से वही यार बात वो है ना कहीं कि पर भी. बहुत जब आप इनके ही दलदल में घुस के और इनके माई बाप पे हाथ रख देते हैं, अब आप देखो ना कि अपने आप को नवाब मलिक नवाब नवाबों का जमाना दौर चला गया, लेकिन भाई साहब अपने आप को अभी भी नवाब समझते हैं। तो उस नहीं, तरह के लोगों के मुझे ऊपर नहीं जब एक्चुअली आपने पता नहीं कि व्हाट इज ही इनटू द पीआर ऑफ द ड्रग माफिया जो जेल में बैठे होंगे, वो कौन आके उनको क्या बोलता होगा, जो तरीके से रोज उनकी एजिटेशन लेवल थी, जो तरीके से आई डोंट नो, ही वाज जस्ट पर्सनली इन्वॉल्व्ड, पर्सनल वेंडेटा समझ के रखा था मैंने, तो उनको अभी तक देखा नहीं है। लेकिन कोई आई डोंट नो व्हाई ही, नहीं, आज मैं अभी तो उनको जो पूछना अब देखिए वही चाहूंगी कि बात है ना ऐसे कि जिसका आपको क्या प्रॉब्लम है? Yeah. जिसका जो इतिहास है, जिसका जो काम है पिछले 20 सालों का, वो धीरे-धीरे चिट्ठा खुल रहा है। और जिस तरीके से ईडी और आज मुंबई कोर्ट में जिस तरीके से बहसबाजी चल रही थी दोनों के, आप तो लॉयर हैं, आप उसको देखिएगा, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और फिर ये लग रहा है कि ओह! ये व्यक्ति इसलिए इतना बौखलाया था ड्रग्स वाले केस में, या ये व्यक्ति इसलिए इतना बौखलाया था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था। क्योंकि हो क्या रहा है, 1.5 साल पहले सुशांत का केस जब शुरू हुआ, उस पे जहां-जहां जो-जो चीजें सामने आई हैं, आज 2 साल बाद सब कुछ खुल रहा है। चाहे उस वे में ना खुल रहा हो, इनके अपने इतिहास खुल रहे हो, किसी तरीके से खुल रहे हैं। मैं कह रही हूँ सचिन वाजे, वैद्या, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो भी किया, जैसे भी किया सुशांत के केस में, आज दूसरे ही केस में जेल जा रहे हैं। आज हवाला में कोई केस जेल जा रहा है, कोई ड्रग्स में केस में जेल जा रहा है, कोई ये डी कंपनी के प्रॉपर्टीज खरीद के जेल जा रहा है। बट कर्मा रिटर्न्स, आई एम वेरी हैप्पी वरुण की, मतलब हम लोग भी कई बार होपलेस हो जाते हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि आज जो एपिसोड हुआ है, मैं फिर ये कहूंगी क्योंकि आपके शो पे बहुत सारे लोग हम लोगों को सुनते हैं और आपके एपिसोड, आपके शो को पसंद करते हैं। एक चीज कहूंगी कि अगर आपने जरा सी भी होप खोई थी, तो फिर से वो वापस पुल अप योर सॉक्स, फिर से जंतर मंतर पे आने के लिए शुरू हो जाइए, फिर पे सारे प्रोटेस्ट के लिए शुरू हो जाइए, क्योंकि जो सच है वो सामने आएगा ही, इधर इस तरीके से आए चाहे उस तरीके से, आप सच को बहुत दिनों तक दबा नहीं सकते। तो आई एम वेरी हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड टुडे। बहुत और सही मैं कहा। कोलकाता में हूँ प्रोग्राम में, तो हाँ, मुझे जाना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और जाने से पहले यास्मीन थैंक जी, यू। ऑन अ लाइटर नोट, राइट, लास्ट टाइम प्रीति जी ने एक चीज बोली थी और मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ। इन्होंने मजाक मजाक में समीर को बोला था कि इनकी गले के लिए दवाइयां या कोई टॉनिक भेजें, क्योंकि ये समीर के लिए दहाड़ दहाड़ के इन्होंने कई बार अपनी आवाज खोई है। सो ऑन थैंक यू दैट लाइटर प्रीति जी, नोट, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फ्रॉम द थैंक होल यू यास्मीन जी, वानखेड़े सब फैमिली। प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू ऑलराइट, वरुण जी, थैंक यू सारे सो मच, आपके टेक केयर, व्यूअर्स जय को भी हिंद, थैंक यू। जय जल्दी हिंद, करेंगे। जय हिंद। ऑलराइट, जय हिंद। शालिनी प्लीज गो अहेड। Thank you, Varun. Hello, Yasmin ji. How are you? हेलो, हाउ आर यू? I'm good. मेरे रात के 2 बजे हैं अभी, लेकिन मेरी आवाज जो है वो पूरी बुलंद है. I'm inspired by you. Thank. एंड इट सीम्स फ्रेश आल्सो। यार वो आवाज सुन के हो गया ना. अब शेरनी जब यहाँ पे इतनी सारी शेरनियां आके दहाड़ेंगी तो obviously वो जोश सब में भरेगा. I've been listening to you. I heard Mamta ji as well, and I heard Preeti ji too. It's amazing to listen to such wonderful souls, such wonderful people. You always inspire everyone, especially all of us. मैं थैंक यू आपसे ये कहना सो चाह मच। रही थी. मोस्ट वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगी हमारे पूरे SSR वॉरियर्स और पूरे टीम को जो who wait for such news. I understand when it comes to you and your family. You have always shown grace, you have always shown poise, you've always conducted yourself very maturely, and your entire family is grounded. लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, तो हम आज मना रहे हैं और we are waiting for more such good news. You know, when you were saying that why was he getting personal and why did he hit below the belt, I just wanted to tell you this, that you know there's always a difference between class and crass, and that's what he has been showing and he's been displaying, right? और आप ये देखेंगे ना कि जब एक गंदगी के सामने अगर कुछ साफ आ जाता है ना, तो वो गंदगी और ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाती है. बिल्कुल, राइट. तो इसीलिए वो और ज्यादा मचल गया कि भाई मचल रहे हैं और मचल गए कि now the whole world will know how dirty am I, what is my thought process. और
आप ये कह रहे थे ना कि वो कौन कौन से सर्टिफिकेट उठा के लाए, माँ तक पहुंच गए, कितना गंदा बोला, कितना फैमिली तक पहुंच गए. सी व्हाट विल ही डू? कोई इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, वो तर्क वितर्क करता है, उसके पास लॉजिक होता है, वो लॉजिक से लड़ता है. लेकिन जो बेवकूफ इंसान होता है, जो घटिया किस्म के लोग होते हैं, that's what they will do, and he just displayed that. He has put himself out in the open for the world to see who he is. He has exposed himself. Um, so people know the difference between black and white very clearly. आपको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. He has done it himself. And Hey, I only would say this on this, that he loves the murk. We weren't enjoying to enter it. He loved the murk. Yeah, Probably. you said it right. When you never fight with a pig, right? Because they enjoy the dirt. You never Enjoy bring the it down thing. to their level. You never stoop. Yeah, yeah. So We he's never gave them enjoying a it. chance to play with the murk. Yeah, you didn't. And that's the difference between, like I said, the difference between class and class. And you always maintained your dignity, and that's why you are an inspiration. You are an ideal family for us to follow, for us to support, and we will continue to do that. Thank We you are so happy much. Thank you so much. that you reinstate our faith in humanity, in truth, in honesty, क्योंकि यही सारे values पे बहुत सारे लोग पले बड़े हैं, लेकिन उनको इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना, इतनी अच्छी तरह से डिस्प्ले करना, इस सबके बस की बात नहीं होती है. और रियल हीरो इसी को कहते हैं. थिंक अबाउट इट. शाहरुख खान की एक मूवी थी पुरानी, आई थिंक DDLJ, उसमें वो डायलॉग बोलता है कि हमेशा हमारी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे को दो रास्ते मिलते हैं, एक सही और गलत. और सही रास्ता जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, और गलत जो होता है वो बहुत आसान होता है. ये डायलॉग तो उसने मार दिया था वहां पर, बट रियल लाइफ में उसने भी एग्जीक्यूट नहीं किया, और रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है. तो whoever can actually go on that path, on the path of truth, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही कठिनाइयों से क्यों ना भरा हो, that is the hero. And that is why you, Yasmeen ji, you and Sameer ji and your entire family is a hero for us. And that's why I keep saying you're an inspiration for us. तो आपके Thank you लिए so हम much. हमेशा खड़े रहेंगे. आप थैंक यू मत बोला Thank you. करो. We are there नहीं, for वो you always. मैं हमेशा 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 बोलती हूँ कि people have been from the start till the end. All have been there. At least, we will for the mental support कि we are there with you, you'll fight. Never एक बार भी question नहीं किया गया कि this has come. क्या हुआ, ये सच बात है? Question mark. कोई भी मेरे को कभी ये चीज का question नहीं किया गया. I am proud on my family. क्योंकि they believed in the Wankedes. They believed जो भी बोला गया है वो ऑफ कोर्स एक सच बात नहीं थी, उसको ट्विस्ट टर्न करके एक बहुत इलॉजिकल वे में पेश किया गया है. सर्कमस्टेंसेस बहुत ही बनाए गए, एक इतना नीचे लोड बिलो द बेल्ट बात की गई दैट प्रोबेबली हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ा कि इतना नीचे कैसे झुके. और जितना झुक सकते थे उतना झुका भी है. So उससे ज्यादा इससे ज्यादा नहीं झुक सकते. बट yes, you have to endure a lot of patience, lot of strength. और सबसे बड़ी बात है कि I would rather मेरे दुख और भाभी और मेरे डैडी के दुख को कम मैं समझती हूँ. I think भाई का बहुत ज्यादा पेशेंट टॉलरेंट लेवल बहुत ज्यादा था. I salute that man as a family man even. He has seen so much, and when you're the cause of it, abhi jaise I am the person who heads my family, and if because of me if something happens, so a guilt feeling hoti hai, कि because of me everybody is suffering, because of me my father, because of me my brother, because of me my wife, my children, I'm not having time. वो चीजों को लेकर वो चीजों को आगे लड़ना और अपनी चीजों पे अटल रहना और अपना आत्मविश्वास स्ट्रांग रखना, तो ये आई थिंक ही इज अ रियल, इट टेक्स अ रियल मैन टू I'm proud to I'm blessed to have him. So true. सबसे ज्यादा peer pressure and you people have always been a big support.
I'm not happy or I'm not sad. Again, I clear myself with his arrest, and I don't have to do anything with him matter. I don't even want to discuss him. I don't allow him to, uska naam hi, I don't allow him to come under my doors. So the thing is, I will not stoop down, even being a woman. मैं लीगली बहुत ज्यादा लड़ूंगी, बट आई विल नॉट लेट द नेगेटिविटी एंटर माई प्लेस. लेकिन बहुत धैर्य और पेशेंस और ऑनेस्टी चाहिए ये चीज को फेस करने के लिए. एंड यू पीपल हैव बीन अ बिग सपोर्ट, वेरी We बिग are सपोर्ट. always there for Yasmin ji, because मैं आपको, मुझे ये मेरी feeling, and I'm sure everybody echoes the same feeling, कि Sameer is not just just an officer. He's not just a police officer. He's just not Sameer. वो हम सब का भाई बन गया है in a way. We associate ourselves with him because he's the beacon of truth for us. He's the beacon of justice for us, and the entire family. You, Yasmin ji, also. And when you're saying as a mother, I cannot imagine what your family has gone through. But as a mother, I can sense and I can feel your fear. तो हम जितनी माएँ हैं वो भी आपके साथ खड़ी हैं, जितनी बहनें हैं वो भी थैंक आपके यू साथ सो मच. खड़ी हैं. So and we will never leave you. Thank you so much. I certainly believe that you people will never leave me. We are a family. We are always and Thank you, forever. Varun. Thank you, Shalini. Thank you so much. All right, Rudra, Thank you, please. Shalvi. Yeah, let's या keep हाँ, in mind. तीन क्विक चीजों पे, तीन क्विक चीजों पे बात करना चाहूंगा. एक, मैंने अभी कमेंट देखा अभी कि किसी ने लिखा वाई शाहरुख खान करके, किसी ने टॉन्ट मारा हुआ है वीडियो. इसमें मैं बोल दूं कि शाहरुख खान ही नहीं, जिन्होंने भी गलत काम किया था, अंडरवर्ल्ड के भी इससे जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने भी ड्रग्स में गलत काम किया था, इम्पार्शियलिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सर ने जो करना चाहिए था उन्होंने अपने उसको जस्टिफाई करते हुए किया, अपने काम को किया. तो ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल किसी पर्सन को टारगेट किया हो, वो हमेशा उस चीज को अपने वर्क के साथ शो किए हैं. तो प्लीज आप ऐसे कमेंट या ऐसी दुविधा माइंड में ना नहीं रखें. बहुत प्यार से. I would also tell this whoever has commented कि I did not see the comment, but it was even Chingu Patan, it was even Batata Wala, it was even everybody was there. Whoever was doing wrong, he was from झोपड़पट्टी से लेकर स्लम से लेकर शाहरुख खान से लेकर, he was not biased about any particular thing. So if anybody is thinking this and anybody is saying कि why Shahrukh Khan, if you are a fan, I see his movies, I also love his movies. I don't have personal, we are not here to do personal things. So please do not go personal. It is the agency which has done a prominent work. उन्होंने अपना काम किया है, वो लोग अपनी चीजें देखेंगे. हम यहाँ पर फैंस हैं. वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पीआर. तो हो सकता है कि पेड है, लेकिन भाई नॉर्मली जो लोग जो उनके दरवाजों पर खड़े हैं सेलिब्रिटीज के, उनको राशन पानी तो नहीं मिलता, खुद जाके काम करना पड़ता है. तो जितना प्यार है वो रखिए. जहां तक के दर्शक है, हम वी लव एवरीबडी. आई सी बॉलीवुड मूवीज. मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो गलत हो रहा है उसको अगर आप गलत नहीं बोलोगे तो फिर कैसा चलेगा. या दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सूरज होती है वो दूसरों को प्रकाशित करती है, उसकी खुद की एनर्जी होती है. जितना मैंने समीर सर को देखा है, उनको जाना है कि इट्स लाइक ही इज लाइक दैट. तो उनको, वो अपने लेन पे चलते थे, चलते रहेंगे, वो दूसरों को प्रकाशित करते रहेंगे. उनको ही इज लाइक सेल्फ मेड एंड सेल्फ सफिशिएंट. और I was just yesterday speaking to somebody. He's like, some friend, people and relatives अभी पूछते हैं कि he will calm down, we will stop walking like that, but मैं उसको पूछे बिना ये बात की गारंटी ले सकती, he will never calm down. He will be doing his work wherever he is posted. और सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग इंटरनेट के दौर पे हैं. तो जैसे जब इंटरनेट था भी नहीं, जब मतलब आजादी की लड़ाई चल रही थी और भी बाकी वर्ल्ड वॉर्स वगैरह चल रहे थे, तो उसको डॉक्यूमेंट करके रखा गया था. हम उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेसन के तौर पे लेते हैं. ये जो चीजें हम वीर गति प्राप्त किए हुए विक्रम बत्रा से, या क्यों नहीं हम ऐसे लोगों से क्यों नहीं इंस्पायर्ड होते? Why don't we get inspired by
people who are freedom fighters? Why don't we get inspired with Olympic winners? Why don't we get inspired for people who have done things for a nation? Why don't we idolize them? हम उनको आइडल क्यों नहीं बना? तो ये तो जो वो तो चीजें अभी दूर की बात हो गई, जो अभी हुआ है वो तो बहुत दूर की बात हो गई हमारे सद्बुद्धि सोच समझ के बाहर है जो भी कुछ हुआ है, लेकिन आई होप दिस डजंट रिपीट। बट आज जो हुआ है जैसे, और इसके पहले भी समीर सर जिस तरीके से अपना काम करके दिखा रहे हैं, जो भी चीज चल रहा है, ये भी चीजें आज फ्यूचर जो के हुआ लिए है उससे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद जो आज हुआ है। वो उसकी जो खुद मतलब इतने सारे काम करके जो तुम खुले घूम रहे हो, तो आई थिंक समवेयर लॉ इज वेरी अवेयर। और जो कुछ हुआ है तो वी डोंट नो अबाउट इट। हमारा कोई भी उसके अंदर योगदान का कुछ भी, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इट इज सब जुडाइज। द मैटर इज आई डोंट इवन नो द होल थिंग। अभी प्रीति जी ने बताया और ममता जी ने बताया तो आई हैव हर्ड जो आगे क्या हुआ है, बट आई हैव नॉट इवन सीन द न्यूज एंड नॉट आई फील आई एम नॉट वी आर नॉट लाइक हिम दैट विल गेट हैप्पी और विल बी सैड और हम देख रहे होंगे कि उनकी बेटी क्या कर रही है, उनकी बहन क्या कर रही है। वी आर नॉट दैट फैमिली। लेकिन हमें एक सच का साथ देना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए और किसी की एक सीमा है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए जी। तो ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर में भी लोग इसी चीज को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे उस हिसाब से सारी चीजों बिल्कुल को। बिल्कुल। माय इंटर्न्स आर देयर। मेरे इंटर्न्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि मैडम आपको देखकर ना ऐसा लगता है कि अब आईपीएस ऑफिसर नहीं बनना, अभी यूपीएससी की एग्जाम नहीं देनी। वो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है उनके लिए, बट देन इट इज देयर चॉइस। इतना बुरा मैसेज गया है सोसाइटी में इस बात का। तो आई लिटरली हैव पीपल इन माय हाउस आल्सो, माय रिलेटिव्स आल्सो, कि अब नहीं देंगे हम लोग यूपीएससी की लड़ाई। वी डोंट हैव स्ट्रेंथ लाइक यू। एक क्वेश्चन था मेरा, कोई अगर इसका जवाब दे पाए कोई भी, तो आई विल बी रियली ग्रेट, क्योंकि सुना गया है कि 14 दिन के लिए वो गए हैं ऐसे। ये जेल से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का कोई प्रावधान नहीं है ना इंडिया में? मतलब ये क्वेश्चन नहीं नहीं, वीडियो बिल्कुल रिलीज कर नहीं सकते हैं और रुद्रबा। क्या? नहीं, वो तो सुबह की आज सोच रहे होंगे कि वो भी नहीं हो पाई ना, सुबह वाली। वही सोच रहा था वैसे ही कि निकल पड़े वो। पता चला जेल से। अभी तो वो बाथरूम भागे थे, उन्होंने सोचा शायद वहां से कर हाँ। पाएंगे, बट उतना टाइम ही नहीं मिला उनको। टाइम नहीं Anyways, मिला। जी जी। that's not yeah. Good one. Thank you, Rudra. Ayush, please go ahead. नमस्ते सभी को और नमस्ते यास्मीन मैम। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो आपको थैंक यू अरे हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि आप एक ऐसे पॉलिटिशियन से लड़ रही जिनको आज तक कोई नहीं जानता था। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोग जानने लगे। मतलब आज ये देखिए कि आप एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, आपको ये किसने राइट दिया कि किसी को फैमिली को टारगेट करें? आपको लड़ना है तो आके आमने सामने लड़िए ना, तो आप वीक पॉइंट पे क्यों टारगेट करते हैं? ये मैंने देखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वीक पॉइंट आई वुड नॉट रादर एग्री ऑन अ वीक पॉइंट। वीक पॉइंट क्या थी उसकी? वीक पॉइंट तो कोई भी नहीं है। जो भी बोला गया वो गलत बात है। वीक पॉइंट तो था नहीं नहीं। पता नहीं, वीक फैमिली पॉइंट आपको उसमें क्या, सबसे पहले चॉइस सेक्युलर है। देती है। मेरी मॉम मुस्लिम थी तो उसमें वीक पॉइंट क्या हो गई? ऑल नहीं रॉन्ग नहीं, यू टॉक अबाउट। अगर किसी माँ का ध्यान रखते हुए कोई, अगर आप सबके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहाँ आप अपने माँ बाप की बात मानते हो। मैंने भी मानी थी, भाई ने भी माना था। इट मेक्स हिम प्राउड। जो इंसान मरने के बाद भी उस जगह जाता हो जहाँ उसकी माँ हो, वो वीक पॉइंट तो नहीं होगा। एंड आई डू नॉट नहीं, बिलीव कि वो वीक पॉइंट था। मैं ये कह रहा था कि जित होता है ना, फैमिली आपकी लेकिन उसको स्ट्रेंथ होती बहुत अच्छी तरीके से स्कैंडलाइज करके, बहुत अच्छी तरीके से झूठ बोलकर सामने लाया गया सिचुएशन को, जिसकी एक्चुअली पब्लिक के ऊपर काफी वो हुआ है। देर आर पीपल who think some different way, but it doesn't matter। सच की हमेशा जीत होती है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और कहते हैं ना कि इंसान कितनों भी चालाक हो जाए, एक ना एक कमजोरी बाहर आ जाता है। अब ये देखिए सुशांत के केस में जिन कातिलों ने उनको मारा, जिसने दिशा को भी मारा, वो सोच रहे हैं कि उन तक गर्दन नहीं पहुंचेगी। ये उनकी गलत फहमी है। एक ना एक दिन उनकी गर्दन पहुंचनी है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि काश अभी अगर होते ना, तो अभी आधे लोग नपते ड्रग केस में। लेकिन कुछ लोगों की वजह से उनको ये आगे नहीं करना पड़ा। Yeah.
बट चलो जो हुआ आज और आगे भी जो होगा, आयुष, आई फील नवाब मलिक वाज जस्ट द फर्स्ट विकेट जो डाउन हुई है, और अभी तो ये बहुत सारे केसेस में जाएंगे, अभी तो मैं शुरुआत है। तो सो आपका ट्वीट सुबह से देख रहा हूँ, आज चीचा जान ये, चाचा जान वो। अभी सेशन शुरू होने से 2 मिनट पहले भी मैं एक चीज और डाल के आया था ट्विटर पे। मैं क्या बोलूं, मैंने यास्मीन जी को भी बताया था, हो सकता है मैं इस सेशन पे शायद अपने खुशी या इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल ना कर पाऊं, बिकॉज ऑब्वियसली यार हमने जितना दिस वानखड़े फैमिली हैज सफर्ड, राइट, हम लोग यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के ट्विटर पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यार ये, और ये इसका एंड कहाँ है, कहीं तो इसका दिखे कि लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और मतलब लाइन लगाई पड़ी है और कोई उसको रोकने वाला नहीं, और हम लोग यहाँ हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आज जब ऐसा कुछ हुआ तो हमें तो ऑब्वियसली इट इज, कईयों ने, वो एक अमोल है जिन्होंने लड्डू के इतनी अच्छी फोटोज लगाई हैं, मुझे तो आज लगता है मेरा तो अब सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं, डेफिनेटली मैं तो ऑर्डर करूंगा और वो लड्डू खाऊंगा भी, क्योंकि इतना टेम्पटिंग था वो, बिकॉज दिस रियली कॉल्स फॉर अ लिटिल बिट ऑफ, यू कहते हैं ना, वरुण, मेरा सेलिब्रेशन। पहली बार मन कर रहा है कि मैं काश एडवोकेट नहीं होती। आई नो, तो आज अरे आप, ऐसा सही क्यों, बात आप है, तो अच्छे प्रोफेशन में हो। बिल्कुल सही बात। एनीवेज, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ, आयुष, थैंक यू सो मच, एंड थैंक अपर्णा यू। जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। बस सर क्या बोलूं, सत्य का तो जीत हुआ ही है। इसके लिए बहुत बहुत सबको शुक्रिया, यशमन जी आपको भी और समी सर को भी। बस सर ऐसे ही अगर सबका योगदान रहा और ऐसे ही अगर सब मतलब इतना मतलब ब्रेवली, मतलब देखे है ना, शुरू से ही जब समी सर ऐसे कुछ मतलब स्टेप ले रहे थे, तभी मतलब हम लोगों को एक तो होता है ना कि कोई अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होने वाला है, एक तो इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है पक्का। तो जब मालिक जी का ये सब बात वो सामने आया तो हम लोग लगा कि हाँ सर शुरू हो गया अभी। लेकिन उस टाइम उस सिचुएशन में जो हम लोग तो देखिए, हम लोग देखे, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन हम लोग फील किए तो उसमें वो शांत रह के इतना सुंदर एग्जाम्पल देके कि सत्य का जीत है। बोल सकते हैं हम समय जी को, के समय जी हम लोगों के लिए सिंघम ही है। तो मैं मतलब मेरा दिल से मानना है कि अगर ऐसे ऑनेस्टी अगर सब में है तो हम लोगों का ये जुडिशियल सिस्टम जो है ना पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगह ऐसा है, बहुत सारे केसेस ऐसे है कि ये सब मतलब डिसऑनेस्ट के लिए बहुत सारा केस ये ओपन नहीं हो पाता है, या तो फिर बीच में ही बंद हो जाता है, या तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो समिति ने रखे हैं। उसका ऑनेस्टी, उसका स्वभाव इतना शांत थे कि मतलब इतना कुछ बोले, इतना कुछ ह्यूमिलेट के, इतना कुछ इंसल्ट के, लेकिन उसमें भी वो एकदम शांत रह के, एकदम चुप रह के अपना आप अपना जो काम है वो करते रहे। लेकिन एक बात तो सर मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसका काम के लिए जितना भी समालोचना मतलब डिस्कशन होगा या जितने भी पीछे लोग बोलेंगे, मतलब वो एकदम सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए इतना डिस्कशन होता है, इसलिए उसके पीछे इतना लोग पड़ जाते हैं, इतना उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो इसको सुन के हम लोगों को चुप नहीं रहना है, हम लोगों को और भी जोरदार से और भी डेस्परेटली ऑडियंस को सामने लाना है, सच को सामने लाना है। और इसी के चलते मैं ये उम्मीद रखती हूँ, अभी भी रख रही हूँ कि सुशांत को भी इस जस्टिस मिलेगा, और उसके लिए हम लोगों का तो मूवमेंट चालू है, रहेगा भी, और करेंगे भी और जीतेंगे भी। थैंक यू, थैंक यू अपर्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू यशमिन जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वरुण जी। थैंक यू सो मच। आकाश, प्लीज गो अहेड। हेलो यास्मीन मैम, एंड हेलो हेलो वरुण, हेलो हेलो ऑल। आकाश। मैम एक्चुअली मैं तो समीर सर का फैन हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने लाइफ में कोई ऐसा ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं देखा था। आई मीन जिस तरह से काम करता है, हाँ मूवीज में एक देखता हूँ, हाँ एक आएगा बंदा अकेले सबको पीट पाट के चला जाएगा, बट रियल टाइम में पहली बार एक देखा। बट हाँ मैं भी फैन एक्चुअली हूँ, ये मैंने भी पहली बार ही देखा है। नहीं, आप अपने घर में भी देखे होंगे। आपको ट्रेलर मिल गया होगा अपने घर में। बट हाँ मेरे ये एक डैडी अच्छा भी थे। लगता है। तो ये जेनेटिक होगा मैम, देन इट्स जेनेटिक। माय मदर आल्सो वाज लाइक दैट। मैम मैं तो मैम एक्चुअली फैन हूँ, आई मीन समीर सर।
बट लाइक ये एक पहली बार मैंने एक देखा, एक ऑफिसर जो इतना ऑनेस्टली काम कर रहा है, जो मतलब कि छोटा बड़ा पे नहीं देख रहा, वो अगर गलत है तो एक्शन ले रहा है। तो ये एक मतलब सोसाइटी में भी एक काफी पॉजिटिव मैसेज जाता है, क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई हम लोग जैसे जॉब करते तो यार कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बट इस तरह का ऑफिसर आते हैं जब तो हाँ एक एग्जाम्पल सेट भगत होता है सिंह यार भी कि बार कुछ बार हो सकता पैदा है। नहीं होता है ना बच्चा। नहीं, बट ये एक एग्जाम्पल सेट होता है मैम कि इस तरह के जो लोग आते हैं ना तो इंकरेज होता है आने वाली जनरेशन को भी। तो ये एक होता पॉजिटिव है। साइड। बट दूसरी तरफ ये भी है ना मैम, मैं फनी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं मतलब आप भी सेशन में आते हो, मैं आपको हंसते हुए हमेशा देखा हूँ, मैंने आज तक समीर सर को कभी हंसते हुए नहीं देखा मैम। इसके पीछे कोई रीजन है क्या? आई मीन ही वॉज वेरी सीरियस ऑलवेज, मतलब जब भी वो आया हमेशा सीरियस ही रहे, कभी उनको मैंने हंसते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों मैम? मे बी जो मे बी आई हैव ही इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। अगर वो दिखते हैं ऐसे काफी यू नो एंग्री मैन यंग मैन, ये दैट इज ऑफ कोर्स ही इज, बट ही इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, ही इज अ वेरी लवेबल पर्सन, ही इज वेरी इंस्पायरिंग ऑल द टाइम। यू उसे उनसे ना अजीब चीजें हो जाती है सेंटिमेंटली। मैं मुस्कुराती हूँ, बट मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ मेरे दोस्त। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं मैम, अच्छा बुरा कोई कुछ नहीं होता मैम, वो नहीं दिख मतलब जाता है। ऐसा होता है ना कि his state is his place, his chair is different. On a Yeah. bureaucracy level, he cannot mingle around with people. अम्म, अभी और एक चीज है ना कि वो हंसते हुए नहीं देखा हो तो किसके लिए कितनी चीज के लिए, क्या की चीज के लिए हंसे। नहीं यार, ये जब भी वो आकाश, अपना काम ये कर रहे तो थे, वो ड्रग्स का पकड़ रहे थे, तो वो हंसते हुए तो नहीं पकड़ सकते ड्रग्स। हाँ, फिर उसके नहीं नहीं, मैं बाद फिर ये सब भी चीजें शुरू हो गई, तो वो हंसते हुए तो ये नहीं सुनेंगे अपनी माँ के खिलाफ या अपने बहन के नो खिलाफ, नो तो मैम, उनको हंसने का वो मौका उस ही नहीं मिला होगा शायद। हाँ, नहीं नहीं, मैं और फिर भी एक बार नो क्लैरिफाई कर देता हूँ आकाश, जाके दोबारा सेशन देखो, लास्ट टाइम का भी सेशन में आए थे हाँ, और मैंने, he had come, he is given a wonderful हाँ, interview to Varun। वो स्माइल ऑलराइट, कर रहे थे बट हंसे नहीं थे कभी। चलो ठीक है, अगली बार मैं रुद्रा आपको हाँ, और बहुत हम सारे लोगों को स्पेशल रिक्वेस्ट बुलाऊंगा। करेंगे, I'll tell him हाँ, to, और हम he just डेफिनेटली, smiles, he's got a very pretty smile। या, गाल में गड्ढे आते हैं उनके, तो he just smiles हाँ everything यस। is। सो ग्रेट। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, अभी तो इसका नंबर है, मैं तो वेट कर रहा हूँ नॉटी का कब नंबर आएगा। डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ, नॉटी का नंबर आना चाहिए। सबका आएगा, सबका ओके। आएगा। एनीवेज, ये We दिस इज believe in समथिंग the व्हिच, judiciary system। या, जो भी करेंगे वो लोग सही करेंगे। अपनी बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम। जो कुछ हो रहा है वो तो जुडिशरी कर रही है। हमारी जो अच्छा। प्रोमिनेंट काफी एजेंसीज है वो सब कर रही है, तो सब सही ही है। एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन पार्ट। एग्जैक्टली, यस मैम, क्लीन अप होना चाहिए, ये तो मैं एग्री करता हूँ, क्लीन अप होना चाहिए। ओके ऑलराइट, मैम, दूसरों थैंक यू को सो सब भी मैं मच। एग्री बोलने करते का हैं मेरे मौका भाई, दूँ। सब एग्री करते हैं। ऑलराइट, बस क्लीन थोड़ा अप तो सा और, होना चाहिए। या थोड़ी देर, I'm going to start to wrap this up. Please go ahead, Judy. Thank you, Arun. I'll be quick because I'm outside. You know that I'm not at home, but I just could not resist myself coming here. Hello, Yasmin ji. हेलो, हेलो। Hello. I start with saying this. This were your brother's words, Satyamev Jayatev, and it सत्य, यस। yes, and the truth always wins, and we all believe in that. We have seen what you and your family have gone through, and now with this, it might be it's a small victory, but we take inspiration from these small victories to go to reach our goals in life. So this is a small step. I also want to tell all our SSR warriors, you know um, enjoy this moment, but need to gear up because there is a lot of more other work ahead to That is do. what I was going to tell you, to overlaps you, that it is not a victory. That it is that we have to fight. There are a lot of wars ahead. No, not consider nothing as in victory. People have to stand and fight ahead. A lot of fights are there. Exactly. And this does not end here because we have seen only with the help of our judiciary system, with you, with advocates like you, lawyers like you, we can take this to the
to the pinnacles where it has to go, True, because we true. don't want And I we don't. just want to convey this from the medium, ma'am, and from your medium, Varun. I hope everybody is hearing me. हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि संविधान में हमारा यकीन टूट रहा है, हम हमारा संविधान में हमारा यकीन नहीं, कोर्सेज सुने नहीं जा रहे हैं, केसेस. Do not repeat that. Do not keep saying that, because when you say that, you convey that message to 100 other people, जिनके दिमाग में ये फिक्स होता है कि हमारा संविधान कुछ कर नहीं रहा है. As that is what I need to believe in the constitution, believe in the judiciary system. वहां से ही इंसाफ मिलता है. एंड आई हर एक को ऐसे खड़े हो जाना चाहिए कि आई वी वांट आवर राइट्स. I think we all will get it. We shouldn't come back and saying कि judiciary system, जब हम ही हमारे देश की judiciary system में यकीन नहीं करेंगे, believe नहीं करेंगे, तो फिर एक problem create हो जाती है. Knock it so hard that everything is heard. True, ma'am, true. We totally believe in it. We want to believe in that, and we hope to see that justice is served for every common man, not only for only the ones having the power, ones having on in higher True, very true. office I level. felt very this thing that yes, sadly we do not have a lot of monetarily powers, and we do not we do not engage. We are not that though powerful. We only stood by our degrees. We only stood by truth, and we only fought with only that. And I am telling you as a citizen that I only fought with my knowledge. We all. So सत्य की इन रियल मायनों में जीत होती है. अगर तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, तुम कितने भी पावरफुल हो, तुम्हारी कौन सी भी चेयर है, बट अगर एक सच्चा आदमी खड़ा होता है ना, तो वो सुना जाता है. And lastly, I would just want to end this, Varun, by telling Advocate Yasmeen ji, if you could pass on a message to Sameer ji. We used to see him in those clips where he would visit your mother's grave every morning before going to work. That's, I think, so his routine. I want to tell him that, mothers love their kids, all kids equally, but they have a little more softer corner for their sons. And his mother is always there with him and guiding and protecting him. And she will see that all those who go against her son will be taken down. So please tell him that his mother is always with him, like a guiding star. Thank you so much, Varun. Thank you so much. Thank you so much. much. That was heartfelt. Yeah, thank you. Thank you. All right. Before I take you, Amol, quickly, Shalini, I think you wanted to say bye, so please go ahead. Yes, absolutely. I just wanted to say bye to Yasmeen ji and to everybody on the panel. It's pretty late for me over here. So I just wanted to take a leave, and all the best to you, Yasmeen ji. We will keep celebrating our small wins, and we are family now. मैं पहले भी बोल चुकी. We are never going to leave you. We're always there for you. And always Thank there you with so much. Thank you for your support. All right. And thank you so much, Varun, for Sure. doing this. You really are a true warrior. Thank you. All right. Good night. Amol, please go ahead. हेलो. हाँ जी. नमस्ते सबको. नमस्ते अमोल. नमस्ते दीदी. सबको सत्यमेव जयते. आज जय श्री राम नहीं बोलूंगा, सबको सत्यमेव जयते बोलूंगा. दीदी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. मैंने आपको देखा है, आप इतने लड़ते हुए आए हुए. आपने दिवाली के दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुबह, जिसमें आपने बोला था कि नवाब चाचा ने हमारी दिवाली खराब कर दी. धनतेरस था उस दिन. पूजा. हाँ, धनतेरस. यस, धनतेरस था. तो मैं चाहता हूँ कि आप सेलिब्रेशन करें और उस सेलिब्रेशन का वीडियो ट्वीट करें. मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगता, जरूर. लेकिन मेरी इच्छा है. हम आपको खुश देखना चाहते हैं बस. Thank you so much. That was heartfelt. Amol. Thank you, Amol. जरूर थ्रू भाभी के मीडियम से मैं करूंगी ट्वीट. There's so much of love, Varun. So much of love, so much of support. बिल्कुल. मैम, सत्य जहाँ पे है वहाँ पे तो सपोर्ट हम लोग करेंगे ही. मतलब जो सत्य को मतलब सच को जो मानते हैं और जो उसके लिए लड़ते हैं, तो वो लोग तो समीर सर को, आपको, सबको, मतलब सत्य को तो सपोर्ट करेंगे ही पक्का.
नहीं, बड़ी बात है, बहुत मतलब सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी बात है. See, I couldn't do anything basically. It was a vested interest of lawyer. मैम ये पावर लेकिन भी support समीर सर को देख के ही हम लोगों को और भी बढ़ जाता है. सीधा बात है एकदम. Yeah. All right. Thank you so much, Aparna. Amol, लगता है disconnect हो गए थे, but you, you know sir. if he comes back, thank you so much. All right. Amol has Last, delete it. हाँ, last one, Girija ji, please go ahead. Amol लगता है disconnect हो गए थे, but Oh. you know if he comes back, thank you so much. All right. Amol has delete it. हाँ, गिरिजा जी YouTube चल रहा है आपका, साथ में प्लीज बंद करें उसको. disconnect हो गए थे, but you know if he comes back, thank you so much. All right. Amol has delete it. हाँ, गिरिजा जी YouTube चल रहा है आपका, साथ में प्लीज बंद करें उसको. disconnect हो गए थे, but you know if he comes back, Yeah, I'm just putting it. हाँ, उनकी voice overlaps हो रही है. गिरिजा जी YouTube Sorry about that. Sorry about the YouTube thing on. No worries. Yeah. Yes, please. Yasmeen ji, you said something very beautiful, that we are not concerned about what happened to X or Y just because they were speaking about us, and we are not going to allow negativity enter into our life, enter our homes, enter our hearts. So that is the most important thing that this movement has to give to every SSRM. Yes, Because exactly. the world will be, there are wrong things going on in the world. That is why we are here, our responsibility. So when we talk about democracies by the people, for the people, of the people, it is not just something to be written over there. It is something that has to be enshrined in our, not just in a constitution, but in our hearts. Yes. To be a part of our responsibility. So it is important that we, just like Preeti Pandeyji said, it is important that we get out and vote. And before we vote, do complete research. Awareness is very important, Girija, at this point of time. There Absolutely. are people, they come up and they say, we don't want to vote any particular party. So Exactly. make them aware there is nota. Absolutely. That's not on. So That's not on. awareness is a bit important. जो बेचारे उन जिनको खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो अवेयर कहाँ से होंगे? So we also Those look we at have that to educate. aspect of life. Exactly. Those who are better off should take time and educate and talk with people. Like very often, people have helpers coming, drivers coming. Driver is there, but you're all the time on the cell phone. You don't ask them what is going on in their life. Or there may be a maid working, people don't talk. So if we can establish one-on-one connect with people with whom we are there, we understand what is it that is going on in their mind, and we will be able to educate them. See, if somebody gets cancer, say whether it is cancer or gangrene or something, we rather prefer to throw off that part, but still continue with our life. Yes. Similarly, there will be parties which have corrupt practices, but for that reason, we can't say all parties are corrupt and then I won't vote. Whatever is there available of that, which is the best. I won't say. Yes, but if nota, I would rather say Yes. if you don't want to, people have their certain beliefs. Some people have, no interference in political names at all. So rather they would go and nota. No. That you don't want to. At least your note will be counted. Yeah, but there are possibilities that can be misused, and nota is also not available everywhere. Okay, so I would rather that people exercise their choice, and if you don't vote and you sit at home, there is every opportunity for somebody else to misuse your vote. Somebody else can put it in the name of some other party. So go to the voting booth. You have a responsibility. You can't just say, okay, I'm not going to exercise my vote. That is number one. Number two is, before you go to vote, read about the candidate and it is not enough if you read about the party. You read about the specific candidate who is standing, because a party may be all good, but there are individuals of all types. To try to research, try to find out more about that individual who stands for the party. Both should be good. Then go and select, right? And if the candidate who are fielded in your area is not, if you are not above corruption, then
voice your to the party that this person is corrupt. This is what we have come to know. Give a ticket to somebody who is not corrupt, then your party will get the vote. Don't keep quiet about it. The moment you come to know, then talk about it. That is something very important, right? Because you want, what is it that you want? You want that you should be the best person that you can be in this world. Whichever party can give you that, the freedom to express yourself, the freedom for a fair world, a just world, the freedom where you can work hard and earn your living without any interference. That's all you want. So nothing else. So if that government cannot provide that, then what use of that government? So it is very, very important that we need to research and exercise our vote. So just don't think, okay, we have elected the best party, we can sit and relax and watch our television and watch our movies and then the world will go around. No. We all have to be watchdogs of democracy. Every day we have to give some time for the nation. We have to see what is it that we can do. Understand. Use the social media. Talk about something which is not right, which is happening, and don't be afraid. Right? We are just bubbles. And if one person dies, nothing happens. And don't be afraid. It's not so easy that everybody can be done away with. Right? Wonderful views. Wonderful views. Thank you so much. People who are in the limelight, people who are in the limelight have to be worried. Common people like us have to express our opinions without fear. And we may think, oh, if such thing can happen to great people, why? Humko to tapka denge jaldi. But actually, no, we don't have lakhs of followers. So nothing will happen to us. So just go and speak. That's it. ऐसे कुछ भी हो गया तो हो गया यार. What is there? Big deal. Just do our part. That's what I feel. Samirji has been a great inspiration. He's a powerhouse. All of us draw inspiration from him. His patience, perseverance. In spite of being throttled from all sides, he has been so focused. So we would expect him to be above, when we say Caesar's wife should be above suspicion. Yes. So everything that he does needs to be above board. And it is above board, and it has to be above board. So all of us want to give him that support, that moral courage, and we will stand with him, and we want to ensure him that we are with him. Whatever Thank you so much. We think that there must be some reason why he's doing it. I do not know whether I can raise it in this forum, but I have this question. That there is this talk about a bar and a restaurant which has been opened before he was 18 or whatever. I'm not concerned when it was opened. I'm concerned why even there has to be a bar in his name, with his license. That is my opinion, my thought. Anywhere he goes, I don't want him to be, he's like my little brother. I don't want him to be associated with anything that is dirt, anything that can lead men astray. So if he were my younger brother, I would tell him, just run the restaurant, remove the bar from there. That is, but there may be a reason why he has. Probably he'll be able to get links to the underworld. He'll be able to understand. I do not understand his position as an NCB officer. How does it help him? But this is again, it was a thing done by my mother long time back. That is what we are fighting in the courts. Right. Yes. So we didn't never ask her that why are you doing this? Why are you doing that? She was a very strong personality. Yeah. And at that age, she told us to sign it. She told him to sign it probably. We are giving reasons to that, and he didn't even know. A person who is involved in doing things, he's catching kilos of drugs, he's catching mines of gold, when he's catching everything. Why would he be interested in selling alcohol? Exactly. If it is the matter of like a public, absolutely, a person who's not supposed to understand, and that is 26-year-old.
You never went back and saw it also. Yasmin ji, We are a हम तो इतने nuclear छोटे से family. We family run don't करते see हैं. what has happened. Yasmin ji, we run a small family. We have nothing else to do. But even then, sometimes the LIC policy expires. We do not know. I'll tell Sometimes, you, I'll yeah, tell you, I'll we tell you, cannot you even know. know, I I'll tell you, totally agree. wait, I totally I agree. need to clear, what posters also has been put by the minister is also wrong. You have to see. Absolutely. The way you have messaged it to me that you should stop this, and why is he selling that? You go and see the place, you go and see the real photo of it. You will be disgusted. Oh, I'm talking about this. It is like a dhaba. It is. We didn't even. I Exactly. especially, Exactly. So, like, my mother made it when he was 17. Was 16. That is sub judice. We are going to give that in the court. But as per the information I'll give you, I can give you a little bit of it as I am here. don't misunderstand. So Don't mistake. You're no, my family. I'm not misunderstanding. I'm Yeah, just with clearing all a the love, common I cannot person's thought. embrace you from here, but I'm saying that like please. But we were, yes, he was I'm said to be 65 and signing it. you are all very young, and I'm just talking to you right straight from my heart because True, true, right, straight. But that is what a common person probably may think. Correct. So let me tell you that Yes, yes, a common person may probably think, and you have spoken from a common person's mind that why you need to do it. But let me clear off that he wasn't asked, he wasn't, there Yeah, present I when he understand did that. it. That's why I'm just And saying. it is not some fancy or exorbitant or some expensive kind of a thing. And Mr. Nawab Malik has even not posted the photo, right? Exactly. That is the From saddening him, thing we of it. don't It is expect more or anything less right to happen. like a pani puri shop or something. When I saw it, I've not also seen it. Can you believe it? Yeah, It is exactly. something that is rented. My dad is seeing after my mother's death. My dad is seeing, and he also doesn't go out. He's not like जो हो रहा है वो rented है. वो वहाँ से जो भी whatever the sub judice matter is, Yeah. whatever he is having it, he's having his little bit of portions from there to survive. We don't have a lot of the financial upcomings. So whatever he had done, and he didn't even know about it. He was busy taking drugs, and he was like not aware that he's doing that. Absolutely. That's what I'm saying. And just in the love of the mother was, my mother was a very strong personality. So she used to say, "Ye sign karo, wo sign karo, yahan chalo, wahan chalo." Yeah, So all that of is us the did it, reason. right? Yeah, all of us That did is it. the reason there are Just some followed what our things to parents it. You were right. Yeah, absolutely. Hope. So, my heart goes out to you for your children because I Thank understand you so it much. is very tough for the children to bear it when the parents go through something and they are No, asked to yesterday stand in the my public domain. yesterday the cousins yesterday people came up to me saying कि सर इतना किलो रेवेन्यू इतना ज्यादा दिया है गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा किलो पकड़ा है, इतना ज्यादा गोल्ड पकड़ा है, एयरपोर्ट पे पकड़ा है, वहां पकड़ा है, ड्रग्स में इतना सारा पकड़ा है, ये इतना छोटी चीज के ऊपर, वो भी 26 साल पहले. So I was like, I know exactly how you know how it you is. can't go back and tell your mother, no, you can't go back and make things what your Absolutely. parents have decided What to is you. over is over. What can we do in the future is only what वो उस बेचारे को उस चीज की सजा मिल रही है जो उसने किया भी ना. Yeah, He's not done it. exactly. All right. I want to be mindful of the time. बहुत देर हो गई, पता भी नहीं चला. बातें करते करते ऐसे लगता है जैसे घर के सेटअप में बैठे हैं. So yeah, we can continue. But यहाँ पर लास्ट के दो लोग हैं जिनको मैं जरूर लूंगा. Thank you so much, Girija ji, and really appreciate the candidness. Kapil, please go ahead, and we'll end up with Anam. Please go ahead. Sure. नमस्कार यास्मीन जी, नमस्कार गिरिजा जी, नमस्कार. और नमस्कार वरुण जी, और नमस्कार एवरीवन. और यास्मीन जी, मैं इस सेशन में जुड़ सकता था शुरू से ही, लेकिन मैं दूसरे लाइव की तैयारी कर रहा था. मेरा 10 मिनट बाद एक और लाइव है ममता जी के साथ, तो उसकी तैयारी कर रहा था. हालांकि वरुण जी ने मुझे शुरू में कहा था जुड़ने के लिए, मैं जुड़ नहीं पाया, माफी चाहूंगा. लेकिन मैं जल्दी से आपको एक बात कहना चाहूंगा. आपको याद होगा कि आज उस शख्स को 10 दिन की ईडी की कस्टडी मिल गई है. अभी खबर आई है, नवाब मलिक को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है. 3 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में रहने वाला है. वो शख्स जिसने कभी आपके पिता के नाम के साथ दाऊद लगाया था, आपके साथ दाऊद का नाम लगाया था, समीर जी के साथ दाऊद का नाम लगाया था, आज उसके साथ ही दाऊद का नाम जुड़ गया है. दाऊद के गुर्गों के साथ उसका नाम जुड़ गया है. और ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये
ईडी का बयान है, ये ईडी की जांच में पाया गया है कि नवाब मलिक ने दाऊद के गुर्गों से कई जमीनें, करोड़ों की संपत्ति, ऐसे दाऊद के गुर्गे जिनका सीधा नाम बॉम्बे बम ब्लास्ट से जुड़ा था, ऐसे लोगों से उसका नाम जुड़ गया है। तो यास्मीन जी, मैं कहूंगा ये कर्मा ही है जो उन्हें यहां तक लेकर आया है। समीर जी ने कुछ नहीं किया, समीर जी अपना काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो आपके ऊपर घूम कर आएगा। अगर आप किसी को, ईमानदार ऑफिसर को, जितनी ईमानदारी से समीर जी काम कर रहे थे उतनी ईमानदारी से कोई भी अफसर आज की डेट में ढूंढने से नहीं मिलता। लेकिन आज देखिए, आज उसी नवाब मलिक का नाम दाऊद के साथ जुड़ गया है और ये ऑफिशियल है, ये कोई ट्वीट नहीं है, ये कोई फर्जी बयान नहीं है, ये ऑफिशियल है। और प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस नहीं आज, है। जी जी, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। और आज दिन में जब मैं ये लाइव कर रहा था इसी सिलसिले को लेकर, तो बहुत सारे लोग बहुत खुश थे। मैंने ऐसी खुशी लोगों की देखी नहीं किसी नेता की गिरफ्तारी में, क्योंकि पता है कि कितनी बड़ी गिरफ्तारी है और कितना बड़ा उस नेता ने काम किया है, जो सुबह उठते ही कभी आपका नाम लेता था, कभी समीर जी का नाम लेता था, कभी आपकी माता जी का नाम लेता था, जो इस दुनिया में नहीं है उन सबका वो नाम लेता था नवाब मलिक। आज उसको कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, जेल में वो चला गया है। बस इतना ही कहना चाहूंगा यास्मीन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल भाई। एंड यस, आप डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन एज वेल। मैं भी जरूर सुनूंगा। और ममता जी, आप जुड़िएगा। जैसे यहाँ धाड़ के गई हैं, जैसे वो और रिपब्लिक और बाकी चैनल्स पे धाड़ती हैं, आई एम श्योर वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू कपिल, थैंक यू कपिल सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, सच में अच्छा अनम लगा। जी। मैं सच में आपके परिवार से बहुत अरसे से मिलना चाह रहा था। हालांकि समीर जी से व्हाट्सएप पे मेरी 1-2 बार बात हुई है, लेकिन मैं ऐसे वन ऑन वन वर्चुअली सही लेकिन मिलना चाहता। लेकिन आज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, अनम जी प्लीज। हाय, नमस्ते यास्मीन जी, नमस्ते कपिल जी चले गए। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि आपके जब समीर जी हैं वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, हीरो हैं कि वो इन सब से बड़े लोगों से लड़ने की हिम्मत है। तो हम सब उनको बहुत प्रार्थना करें कि उनकी हिम्मत ना टूटे। एंड बस उनकी वजह से हमें सुशांत को जस्टिस मिलने की एक राहत मिलती है। तो उनको बस हम ये प्रार्थना करते हैं उनकी परिवार को, सबको बस कुछ ना हो। तो बस मेरे तो 2 मिनट के लिए बस इतना आना चाह रही थी। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू गिविंग सो अस योर मच। इनपुट एज वेल। एंड your input is also very valuable. So it's थैंक यू। in a sense to keep, and we will keep on kind of praying and keeping fighting for justice, because it's going to be a long way, but we won't stop It's a till we long get way, it's a long justice. way. It is, but it's just because isliye, in a sense, I would say that they were very clever to do this way, because they knew that it'd be difficult, but we won't give up that easily. So we just have Thank to you, keep on thank you. hoping that one day we will get justice, because there's always a hope. There's going to be a brighter side to the end. So that's why. Looks like Thank you उनका, very much, Varun ji. all right, Thank you. thank you so much. Looks like she was disconnected, या उनका नेटवर्क बंद हो गया होगा। बट एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा, all right, she's back. So thank you, Anand. Yeah. हाँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, before I let Shweta say anything, आज इस सेशन में, हालांकि we all know about the entire Wankhede family, but one thing which also I got to know, कि जैसे यास्मीन जी ने अपनी मदर के बारे में कुछ चीजें बताई है ना, that is one person जिनके बारे में obviously हमें नहीं पता, and unfortunately वही कहूंगा कि she's no more with us, but yes, I'm sure उनकी ideology, उनके principles, उनकी values इनके बच्चों में दिख रही है। उनकी द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग टेल्स अस, और मैंने जैसे बताया, चाहे वो यास्मीन हो, चाहे वो समीर हो, द वे दे हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। पर्सनल लेवल पे ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू नो फ्रॉम यास्मीन जी एंड ऑल कि कितनी हार्डशिप्स पर्सनली ये लोग फेस कर रहे हैं, एंड स्टिल they are standing strong. दे अभी इस सेशन में भी इन्होंने कुछ चीजें और बताई, और जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा हूँ, राइट, मुझे और ज्यादा एक तरफ से आई फील अ लिटिल अनहैप्पी अबाउट द वे थिंग्स हैव हैपेंड, बट
उतना ही ज्यादा एग्रेशन और गुस्सा आ रहा है मुझे उन क्रिमिनल्स के लिए जिन्होंने इस चीज को किया, क्योंकि दे हैव मेड दिस फैमिली सफर सो मच, इतना ज्यादा, इतनी सारी चीजें इनके अगेंस्ट गलत स्प्रेड आउट की। यस, एट द सेम टाइम एक ऑफिसर को वैसे ही अपना काम करते रहना चाहिए और करने देना चाहिए, बट just stopping him by attacking the family, by attacking small kids, attacking a 70 plus year old dad, a mother who's no more, was something very shameful. एंड दिस गाय इज पेइंग द प्राइस फॉर दैट। अभी 10 दिन क्या, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ गिरिजा जी ने ये भी लिखा है कस्टडी विल बी एक्सटेंडेड, तो 10 दिन का कब वो 100 दिन बन जाएगा, एंड दैट्स गोना बी द कर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ये सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं है, ये सारी दुनिया के अराउंड। आज इस सेशन पे मैं देख रहा था somebody फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम यूएस, इंडिया, कनाडा, सब लोग यहाँ बैठ के यहाँ पर Yeah, I was so heartfelt when Amol told me that आप उस दिन मनाएंगे और मुझे Yep. फोटो देखना है. It was really, it's very touchy. People are emotionally with us, and Yep. it's so nice to know that. It's just not your pain, it's all our pain, and we have gone through So, this. But हम same level का pain तो obviously हमने नहीं feel किया, but hats off to all of you. Shweta, you want to say something before we wrap up? Yes, Varunji. So, just want to say, Yasmin Di, that keep motivating and inspiring us the way you do. And my personal experience seeing the family is like I have gathered that strength to raise the voice for justice more. I did, yes, step into Sushant's movement for justice because I've been always very docile. I never used to speak up, but Sushant's movement was one, yes. But when I stood and spoke for a cause, it's the family, it's the Wankhede family who gave me that power or the inspiration to come up and put my words through. So more power to the family, more power to you, Di, and keep motivating us the way you do. Thank you. thank you, Shweta. All right. Okay. बातों बातों में जैसे मैंने कहा, 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, and we could continue. Yeah. But एक बार जी, before we end, before we wrap it up, सबसे पहले तो मैं thanks तो obviously करता ही हूँ, but at the same time now I've also stopped saying that much, क्योंकि obviously we are family, we know हमारी ये responsibility बनती है कि एक दूसरे के साथ लोगों को inform भी करते रहें कि what's going on, and I think we got to know a lot कि क्या चीजें हैं, और I know the case is still going on, और थोड़ा there are some details that cannot be shared, but just be rest assured on behalf of all the people who are watching, who will be watching it later. We are constantly here. We are never going to be away from this battle, this fight that you all have. और हम लोग ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे till the time Thank you, Varun. all the नवाब्स of the उनकी सबकी नवाबी जब तक नहीं उतरती तब तक हम भी नहीं हटेंगे. So anything that you want to add or to wrap it up? कुछ कहना चाहेंगे आप, यास्मीन जी? Acha, I was waiting for Girija to the way she was like listening. It is a hard journey. It is a very hard journey. Or I would rather pray that nobody else has to see it. दुश्मन के साथ भी नहीं हो, जो जो हुआ है एक ऑनेस्ट ऑफिसर की फैमिली के साथ. But I will not even say कि have the strength, or I would not rather let this history get repeated. किसी के साथ भी ऐसा ना हो, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता अपनी रूल्स को, अपनी रेगुलेशंस को, अपनी सीमाओं को ना समझे और बिलो द बेल्ट हर्ट ना करे. I would not rather let it happen. And thank you for the immense support, Varun, that we have been getting. The belief that you people are always there. Yes, was very heartfelt. Is everybody's belief is very heartfelt. और ये किसी के साथ ना हो, और कोई भी ऐसा नेता आगे पैदा ही ना हो जो ये काम करे. प्लीज, मतलब हर आई ऑलवेज थिंक दिस कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन आई हैव एन एनजीओ also where I see women. So I have a NGO which deals with women and child development.
So the women who come enter for help, they are not so strong. I see people around me, they are not so strong. We have very few women around us who can stand strong due to less of education, probably dependency on the financial state on a man or a husband or a father. I don't see usually so strong women. तो सब जैसे सबके साथ नहीं होता, तो डोंट टारगेट ऐसा, प्लीज अगली बार कोई नेता ना करे कोई ऑफिसर के साथ. इट्स अ सिंपल थिंग, गो टू द कोर्ट, डील देयर. लेकिन ऐसी गंदे आरोप ना लगाए, क्योंकि हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता. They have their internal life which he likes to, probably these people like to explore. We do not want to come out with our internal life, internal pain. भले हम लोग बैठ जाएंगे, we will sit with our makeups on and we'll smile, but we know how the journey was and is. We know it. So I pray that this doesn't happen to any of the government officials. Rather it be Maharashtra, rather it be Delhi. I am, anyways, कोई भी एक ड्यूटी पे ऑफिसर हो जो अपना काम सच्चाई से कर रहा हो, उसकी फैमिली के साथ और उसके साथ ऐसा ना हो. And especially from some place where the political leaders, as we choose them to be our own, we choose them for our betterment. We choose them to enlighten the government, like to enlighten the public, for the people, by the people. So we don't want it coming from that place. वो हमारी ताकत होनी चाहिए. I would like him to be felicitated that what he's worked, what he's done. तो उसको फेलिसिटेट करना चाहिए कि रॉन्ग थिंग को रॉन्ग और राइट थिंग को राइट बोलना चाहिए. सो आई थिंक यही आई वुड लाइक टू गो फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, वरुण, टू से कि दिस शुड हैपन. And I don't ever say be strong, I have the power, or blah blah blah. No, this I should say कि not should this history should never be repeated with anybody. एब्सोल्युटली. एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है, अगर आप इफ यू वांट टू फुलफिल दिस विश फॉर प्रमिला जी, कि एक बार आप मराठी में कुछ बोल दें. बोला ना सर, सांगा. All right. So thank you so much. जय महाराष्ट्र. मी मराठी आहे, मला मराठी स्पष्ट बोलायला येत नाही, पण मी पण महाराष्ट्रीयन आहे. All right. Okay. इतना तो मुझे भी समझ आ गया, जो who's a non-Marathi. So obviously, thank you so much. Because we were, I'll tell you, Varun, I'll tell you the reason. There are a lot of people who ask me, तुम्ही मराठीमध्ये कशाला बोलतात नाही मॅडम? तुम्ही मराठीमध्ये बोला ना, मराठीमध्ये फाईट करा, तुम्ही मराठीमध्ये बोला. I know little, I know how to speak, but then we were grown up in a convent school. My school was Auxilium Convent, and we were fined out there if we used to speak Hindi and Marathi. So it went so usually with us, the whole thing in the English, and it was so common that we just we are not so clear in Marathi. But I think not the language, but the honesty speaks. Sentiments, absolutely, the sentiments The sentiment speaks. Exactly. So jate I see Bhavna join as well. Bhavna, please go ahead. Hello ma'am, how are you ma'am? एक मिनट, just wait. मेरे को लगता है टर्न है वो बेडरूम की तरफ. Yes, I will wait. Okay ma'am, just wait. The emotions are so beautiful, na? The emotions are very high. Yeah. Hi. Okay. Yes ma'am. Hello Bhavna. हाँ जी. मैम, समीर सर कैसे हैं? मैं उनसे फ्यू मंथ्स बैक मिली थी, एंड मैम मैंने एक चीज उनमें नोट की स्पेशली कि इतने डाउन टू अर्थ हैं सर, इतने उन्होंने हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया वहां पे कि हम लोग, मतलब हम तो अपने आप को सब लोग कॉमनर ही मानते हैं, कॉमन पीपल हैं, बट जब वो हमसे मिले ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमसे अलग हैं. और उन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया, काफी नॉलेज दी इसके बारे में कि आप फ्यूचर हमारे साथ में जुड़कर कुछ एजुकेशन बच्चों को देंगे जो ड्रग्स के लिए होगा. और इतने कूल वो लग रहे थे. मैंने शायद फर्स्ट टाइम ऐसे किसी ऑफिसर को देखा है जो इतने कूल हैं और डाउन टू अर्थ हैं. किसी से भी ऐसा नहीं लगा कि वो बिल्कुल, मतलब ऐसा सोच रहे कि यार ये तो कॉमन है और मैं इनसे कितनी बात करूं, और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारे में से है नहीं.
ये मुझे जस्ट आपको बोलना था मैम। और मैम सर के साथ जो भी लास्ट फ्यू मंथ्स में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि सर ने उसको बहुत ही इजीली वे में सॉल्व किया है, बहुत कूल तरीके से इसको लिया है। चाहे इनको बहुत टेंशन भी उन्होंने फेस शो नहीं किया है, बट जो कर्मा है, गवर्नमेंट्स देख रही है, मोदी जी और ये सब लोग एजेंसीज देख रही है कि सर के साथ क्या हो रहा है। मे भी आज नवाब मलिक के साथ वही हुआ है। जस्ट मुझे सर यही मैम कहना है। हाँ ना, उसके साथ उनके साथ जो हुआ है वो उनके प्रॉब्लम्स होंगे। वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। द एजेंसीज आर क्वाइट प्रोमिनेंट, तो वो लोग बड़ी स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है, अगर जो भी करेंगे सही करेंगे। वी आर नॉट हियर टू टेक द वेंडिटा और समथिंग। लेकिन जो आई वुड से कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली पॉइंट। आई स्टिल कम एंड आई कैन नेवर स्टूप डाउन एंड हिट बिलो द बेल्ट. I will never say ki, oh, I'm happy or this or I don't know what is happening. I'm not bothered what is happening. I'm going what I'm asked to. I'm going on my path. Whatever the inquiries are there, whatever the documents are asked, we are giving that. We are dealing with that. The war is not over for us yet. We have to still stand in the courts and answer. We have to give still the statements and clear our investigations. We have still dates going on, and it is not easy for us. जैसे कि आपने बोला ना कि एक बहुत बड़ा कूल दिख रहे थे वो, आई वुड रादर काश सच में ऐसा होता कि हर चीज कूल होती। बहुत हार्ड होता है एक अकेला इंसान जिसके पास कोई भी ताकत ना हो सिवाय सच्चाई के लड़ने के लिए। सो आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक सच्चाई का साथ लेते हुए, सिर्फ जो हमारे पास है, जो सच्चाई हमारे पास है, जो है वो है, उस चीज का साथ देते हुए उनकी घर की औरतों को बदनाम किया जा रहा है, उनके डैडी को परेशान, उनकी मृत्यु माँ को परेशान किया जा रहा है। इट वॉजंट कूल, नॉट एट ऑल, इट वॉज कूल। And still we are the thing is not kisi ki, we don't run with that mindset of destruction. So if Mr. Nawab Malik is arrested, that is not our thing, that's, we are not going to be happy and we are not going to talk his language, that jashan manao, jail mein jayega, turunga taknar, and we don't want to go stoop down so low. We are not of his category, very simple. So we will not talk, we will keep that humanity with us. And whatever the agencies are doing, they are well known at it. Whatever he's done, he's going to face it. And whatever we are going along, जो जस्टिस के साथ हम लोग चल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक ताकत है भाई, सच्चाई की। ना पैसा ज्यादा है, ना पावर है, सिर्फ एजुकेशन है, डिप्लोमा है और सच्चाई है। And that was not cool. We know how it has gone through. No ma'am, maybe but yes, he never left his उन्होंने कभी अपनी जो चीजें, he's never lost it. I'll tell you a little bit of incidents before I leave. Sure. The day I have registered a magistrate complaint for defamation against him, and I was taking out the papers, and I was very hyper, and I was all running over the house. Like, I am basically very, very, very little aggressive. I wouldn't say much, but little aggressive due to my nature of job. So he just calmed me down. He's like, calm down. It happens. We have to fight. If you are like, you just take care of yourself. You low down on your sugars, your blood, levels and all that. Just calm down. Things will be fine. And that, at that particular moment, that the calming session was a thing, was a big thing, because, I am considered as the mother of the house. So if I lose it, I run around like, like a mother, like a proper, like, I keep shouting. The way he's like calming down. He was calm and composed all the time. I said, if you're hearing something wrong, imagine I am at that place where my sister is coming on the national TV with her a vacation which she has spent with her children. With whatever mugahi karne ke liye, why would I do mugahi with some money that I had saved for my vacation? वो जो भाई मेरे CCTV देख लो, जो कर रहा है, I will do that later on. I will prove whatever I want to. लेकिन you don't have to hit below the belt.
And we have the Wankhede family has seen a very wrong time where my father was questioned with papers. एक जगह पे मुझे ऐसे फील होने लगा कि हमको पूछा जा रहा है कि आप इंडियन क्यों है? आप मतलब कहाँ बताइए, सबूत दीजिए कि आप इंडियन हो। तो हमारे पास क्या सबूत है कि हम इंडियन हैं? So still, I do not have any vendetta or revenge part, but it was quite hard, and I hope that we cross the whole struggles like that. It was very hard. His simplicity passed it off, at a time it was a lot of pressure, but he was there to handle everybody. Yes, Yeah, ma'am. too much. It was a very hard time. Caste भी पूछ लिया गया, proof भी दे दो caste का। अरे हम कैसे बताएं if we are Muslims? We'll say ना, we are Muslims। कोई अगर किसी normal logic है, logical इंसान है, when you have that logic, if you're not, you're not. If you're yes, yes. We're staying in a culture. We're staying in India where people are very sentimental about the religious part. So if I'm going to tell Mr. Nawab Malik tomorrow, no, you're a Maharashtrian, he'll say, sorry, I mean, if you're a Muslim, so he's like, of course I'm a, why would I say no? So it was a lot of things which was going on. It was a lot of asking of the caste, and it asking about your marriages, asking about whatever was the past. There were something personal issues that two people couldn't stay together happy. How hard it is to understand as a logical person. What was the language which was used for it? What was my from 2008? My brother is into an IRS officer. He's been posted at a different place. How many times did you hear me? How many times did you see me from 2008? So it was like a sudden thing for everybody, and it has not gone through well. We are still under the fight. We're still facing a lot of things. It's just that yes, we're going on. Then it shouldn't be repeated again. All right. भावना जी आगे कुछ कह रही हैं, you're mute. नहीं मैम, जस्ट आपने जो भी बातें बोली है ना वो बिल्कुल राइट बोली हैं। एज अ कॉमन मैन जो हम फेस कर रहे हैं वो आप भी आपकी फैमिली फेस कर रही है। हेड्स ऑफ टू योर फैमिली। कि मेरा जस्ट यही है कहना कि सर को जो सर ने प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली ने देखी हैं जो फेस की हैं उसमें सर इतने काम थे। मतलब कूल वर्ड वाज वेरी रॉन्ग, मतलब काफी काम थे वो मैंने देखा और मुझे लगा कि हम सबको भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। मैं उनको एज अ आइडियल ले रही थी, मेरा ये कहना था। और मैम जो आप He कर shouldn't रहे हैं, lose the हाँ way he kept his tolerance. The way my father also has kept the tolerance. So it's of course salutable, and then नहीं, everybody. My cool तो वो bhabhi है, also, she's been very patient. I have to say, Bhavna, you're not wrong in saying cool, because the way he talks, the way he chats, the way he interacts, the way he walks, हर चीज, अभी सबने वो देखा होगा, एक क्लिप था छोटा सा, जो अपनी जीप में से एनसीबी के ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं और बिहाइंड हिज बैक ही इज डूइंग द थम्स अप. ही इज अ cool guy, He's a cool. he's a cool dude, no Yeah, doubt he's a about it. cool. But He's a ये cool. ये जो कूलनेस है, राइट, हम सबको ये भी याद रखने की जरूरत है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कूल एटीट्यूड रखना. Hats off to his mental strength and hats off to his upbringing is all I can say. It's not easy. It is not easy for anyone. मैं कहता हूँ, हम लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं, हमारी उतने में हवा टाइट हो जाती है कईयों की. तो दिस गाय इज रियली एट द गन पॉइंट. लिटरली मैं कहूँगा अटैक्स हुए हैं, फिजिकल अटैक्स हुए हैं, मेंटल अटैक्स हुए हैं, सोशल मीडिया अटैक्स हुए हैं. Still, this guy has done what he was supposed to do as part of his job. Kudos to him, and more power. जहां पर भी हो, जैसे भी हो, we wish him all the very best. Thank you. Okay. I will convey that, Varun. Yep. We Yes, have never seen him that's- burst in anger or get upset or show how helpless he is. So he has maintained his temperament. Yeah. I always say patience is a virtue, and patience is not just keeping quiet but always keeping quiet with the right attitude. That he has shown as an example for all young people. Very true. I Okay. do not have that virtue. Not everyone has. Not And everyone is blessed with that virtue. okay, वैसे तो मैं wrap up करने वाला था, but I think this is the perfect ending because we see Shri here. And Shri, please go ahead. I would love to hear, what you have to say.
Yeah, I'm thank you gonna be so on mute. much, Varun. And hello, Yasmin ji. I heard the Hi. entire conversation. Um, Kudos to you and family. And we stand strong as always. And I would make this very clear because people think that, we are supporting only the so called quote unquote people who become celebrities, right? People who are being talked about. But as an individual, I would say that, you know, I'm staying strong with someone who is on the right path, who is fighting for the righteousness, right? So for us, it is supporting the right cause. It's supporting my nation, the good for my nation, right? Because the current case being the drug thing, right? So for us, if we are supporting Samir sir, uh, for whatever he's been subjected to, which definitely he doesn't deserve, the family doesn't deserve, because even if there is a battle, it should be fought on logics, it should be fought on facts, not on picking on the personal thing about the families again where there is nothing wrong. So let us be very very clear about that. So there is the family which is his strength, and the family that doesn't have anything wrong. So our support is definitely with him, and we will stand for the right thing. uh, we see the right thing, so the right is the person who is on the right path, and which is definitely, most definitely, serving my country too, right? Serving my society too, so making a better world for each one of us to live in, to breathe that fresh air. So the news, and I really really applaud you when you said that, the news about this Chacha ji being arrested and eventually going to jail for 8-10 days now. You very rightly said that you don't let such negativity enter your family zone. That is such a powerful message, and that is such a positive thing for each one of us. Otherwise also, right? So you inspire us that, you cannot. So there is a line that everyone needs to draw, what to take into the family, what to take in personally, and still continue fighting for the right. So that's a very very good message that you give us. Thank you, thank you, thank you so much. And I would not talk much because it's already been a very very long session, and people have spoken wonderfully. Preeti ji, Mamta ji, each one, Girija ji, and everyone spoke so beautifully. And needless to say, you are definitely a very very strong person, and you inspire us. So thank you so much. Looks like we all were on mute. Okay. Yeah. I think thank you, Shri, for those strong words. And of course, everybody definitely did speak. They'll say, and the emotions were too. All right, guys, I am gonna definitely take the last one. नहीं तो यहाँ तो हम मुझे लग रहा है, we are gonna make a record. But Sonu ji, please go ahead. Sonu, Bhargav, you are mute. Hello. Yeah. Yes. Hello. Yes, Hi, please go ahead. Yasmeen. Hi, Sonu. I'm just so proud of your whole family. And I think your brother deserves an Oscar. I just wrote down that for the brawn and the brave and what temperament, man. I salute his temperament. And Yeah, I think very he's true. an example. He's an example for your youth, and not only youth. I am older than him. I learned so much from him. Yeah, how to maintain grace and patience and Yes, humanity under pressure. true. I mean, what pressure, man. उसके अंदर जिस तरह से behave कैसे करना चाहिए. I salute him for that. And in fact, मेरी एक मुहिम है where I see like people like him, and I always say कि instead of Bollywood actors, we should have such people in advertisement. I actually want to put forward to whoever is listening out there in the world, take him as in their advertisements. Maithili Thakur is another one. She is a Bihari singer, and she personifies Indian values. Samir Wankhede is another one. He Thank you should so much. be, yeah, he should be in advertisements in India. And please convey to him that if he anytime needs any help in
creating You are yeah, in creating awareness in anti-drug campaigns in India, in Indian schools. I have like some material that I can send from here. I'm in US, and there is like 1 week every year that they have in our children's school, where they create a lot of awareness against drug use, and it's called Red Ribbon Week, and we can create something like that in India too, where beautiful idea. yeah. So please convey it to him if he needs any ideas, because Sure, he would I'll be do the that. right person. Sure, it's a Sure. beautiful idea. Yeah, so I mean, you can ask Varun. He can. I will be in touch with him, and I would like to help and start something like that in India. Perfect. So Very Re- beautiful. yeah, Ready. Very. Thank you. yeah. This is Thank you. That's all I wanted to say, and I'm proud of you too. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Girjaji, you're Bye. mute. Thank you. Girjaji, you're mute. You are mute, Girjaji. okay. Okay. This is the most beautiful thing that has emerged in today's discussion, that you are talking about how we can influence the young people in the youth in the right direction, because that is the Yes. greatest fear today, that all the other nations are trying to overpower India by infusing drugs into our young population. So we Yes. know which are the countries who are trying to do it. And one Samir Wankadeji is not enough. All parents and teachers have to unite in this effort. And thank you, Sonu Bhargavaji, for doing this. Varun, please take this up and we'll all do Yeah, it. please take this up. Through Sure. Rotary also, I will influence all the schools possible. We'll Perfect. do it. Perfect. Yes. Wonderful. Thank Yeah. you. Thank Beautiful. you. Thank you, Sonu. Let's get connected. All right, all right. To wrap it up, just on a personal level, Yasmin ji, since I will definitely have Samir someday, very soon, and we'll talk about more things. But can you share anything that can definitely make him like smile, laugh, happy? Anything that you can reveal from your personal, कोई ऐसी चीज हमें बता दें जो हम उस टाइम पे शेयर करें उनके सामने, so that we could also get a chuckle out of him. And it will be a secret between us. Don't worry. हम नहीं बताएंगे, आपने बताया. And it's like he used to be very shy. Okay, looks like her network issue. I want to learn how people whistle. The men, the way they whistle. Because I was always the man of the house. So he's like, I don't know how to do that. Okay. So I think I used to being a boy. You don't know. This is around college times. It's when he was a small child. And I was like, teach me. So he tried a lot of times, and once it just blew off, it just blew off. And there was this girl who was passing by in front, and just looked me at, and he ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गया. This can land me in trouble it as was well. just beautiful. Yeah. No, he's a cute person. He's so human. He's strongly so human. I have one more incident where I will say that there was a maid, and she worked with us when we were kids, we were children, and she suffered with cancer, and I did not know that. And the family called me up and said, "Mom died 1-2 years back." I said, "That is very sad to know." And I said, "I'm there with you." No, you don't need to be there. Brother is taking care of us. He even came in the funeral and everything. So he's always in touch with us. He's asking how, and he makes special calls to the family to ask when. And I was so touched by this that he never even spoke about it on a table or a dining table where we discuss things. It's always on a Saturday and Sundays. We are all there with each other. But he never spoke that I've done this, I've done that. You'll never hear him. He's a great human being. He is from the inside out. He's a beautiful person. Great. Great. And to see him in such an agony, such pain, is very heartbreaking. And never I saw it as a sister.
2008. The people will get their karmas. They will get what they have done, but it shouldn't have been done on the first place. Sweet. So thank you once again, for sharing such things, and we'll get to speak to him very soon, and then we'll know Yes, more yes, yes. about Samir, the man, the Singham. And all I can say right now is, more power to you and more A blessings righteous to your person. family. Yeah, and more Thank you blessings so to much. your family as well for standing for the truth and fighting with all the humility and dignity that you have shown. And we are really proud of Samir Wankhede, and we are really proud of the entire Wankhede family. So more power, more positivity to you, and regards to Kranti ji, to kids, and to uncle as well from all of us. And we'll talk soon again. Till then, take care, and Sure. God bless. Thank you so God much. bless And you. Thank thank you. you. Thank you, Rija. Thank you. All right. Thanks. Bye. Thanks. Bye bye.